कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें क्योंकि जब भी हमारा सेशन शुरू होता है कम से कम उस समय तो हम लाइव दिखें। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good तारिस्ता मैम, Sir, yes, sir. मैम प्लीज स्टार्ट इट्स द टाइम। Okay. Sir, I am audible. यस मैम, यू आर गुड। Okay. A very good afternoon, ladies and gentlemen, esteemed participants, scholarly delegates. A heartfelt welcome to you all. We are assembled at this prestigious venue for the grand event of the National Conference on Artificial Intelligence in Research, Recent Trends in Research, and Pathway to ResearchGate. This is Danishta Khan, Assistant Professor, Faculty of Education at Mahavir University, and I will act as the beacon to guide you through today's invaluable intellectual explorations as we journey through insightful presentations and stimulating discussions. Let us remember that our purpose it is to learn, collaborate, and catalyze change in research methodology. Now, without further delay, let's dive into our promising schedule. Now, before starting the program, I would like to tell you something about Saraswati Vandana. The Saraswati Vandana mantra is one of many mantras chanted to gain favor with the Hindu goddess. Saraswati, known as the mother of the Vedas and champion of knowledge, wisdom, and the arts, Saraswati is also considered a part of the trinity of Saraswati, Lakshmi, and Parvati. Now I would like to invite respected Professor Dr. S.P. Singh sir, Professor and Dean, Faculty of Education at Mahavir University. Thank you so much, sir, for nice video. Today's conference theme, a very most important topic, academic writing, editing, publishing, and avoiding plagiarism, aims to bring to light various aspects associated with this topic, thereby sparking thoughtful discussion and stimulating new ideas and open discussion. It is indeed a golden opportunity for each one of us to enrich and enlighten ourselves. Now, without further ado, I would like to again invite respected Professor Dr. S.P. Singh sir for welcome speech. Thank you मैम, thank you very much. Good afternoon, one and all present here. This is Dr. Shivpal Singh, Professor and Dean, Faculty of Education, Mahavir University, Meerut. Welcome to our resource person, guests, educators, faculty members, research scholars, and students. In our sixth day of 10-day online conference on artificial intelligence in research, recent trends in research, and pathway to ResearchGate. Let's open our mind and heart to new areas as we come together to learn new facts and share knowledge. It's my privilege to welcome our today's eminent guest speaker, Dr. Sweta Rani, Program Director, Research Circle, CTPD, India. She is an Assistant Professor, Department of Geography, DR.SHIVPAL Singh College,
University of Delhi, in New Delhi. Today, she will discuss in her lecture academic writing, editing, publishing, and avoiding plagiarism. She has generously agreed to share her expertise with us. She has also a vast experience in research methodology. So welcome you, ma'am. Before going ahead, I would like to introduce a little bit about the theme today. Academic writing aims to make an objective arguments using evidence. Writers support their statement and key points using facts and evidence-based research. They use data and analyze to present an argument objectively without stating their own belief or assumptions. Academic writing is generally quite formal, objectives, and technical. It is a formal by the avoiding casual or conversational language, such as contraction of informal vocabulary. It is impersonal and objective by avoiding director reference to people or feeling instead of emphasizing object and facts and ideas. The four main types of the academic writing are descriptive, analytical, persuasive, and critical. Each of these types of writings has specific language features and purposes. For example, of academic writing, including book reviews, critic papers, essay, movie analysis, reports, and research paper. The most common resources in the academic writing is to explain some ideas or research findings and to persuade readers that your explanation or a theory is the correct one. In doing so, you may need to describe an objective, place, and activity. There are 10 main features of academic writing. It is the genre of the writing used to all academic field. Scholarly writing is not a better than journalism, fiction, or poetry. It is just a different category. Learning academic writing sharpen mind, teaches students how to communicate and develop their thinking capability and ability to understand others. Writing is thinking, and every student deserves to be a strong thinker. Next point is academic editing. Academic editing arguments the language equality and quality by the fixing and errors in grammar, punctuation, spellings, tone, syntax, etc. It also eliminates reiterations, vagueness, and redundancy to make the writing more precise, coherent, and easy to understand. The different types of the editing are developmental editing, writing editing, copy editing, and proofreading. If you are seeking academic editing, mechanical editing is the step of making sure that your paper conform perfectly to the style guide your paper is writing in MLA, APA, and Chicago. Mechanical editor carefully read your paper to the ensure consistent abbreviation and punctuation. Next point is in our heading is publishing. The publishing process consists of two phases, peer review and the production process. Most academic publishing is centered around peer review. Once an author submits the manuscript of the journal, the writing goes through the quality assessment before it's published. Publishers make money by selling the journals
in which the papers are published. However, the authors of the research paper are not paid. On the contrary, an author pays the article proceedings fee when their manuscript is accepted for publishing. Traditionally, all scholarly articles and books are published after a peer review process, an editing and copy editing process, and they were distributed by the publisher in the position in print and make high quality scholarly work available in the world. Academic publishers must adapt these trends, embracing digital technologies, fostering collaboration, and exploring sustainable funding mechanisms. By doing so, it can continue to facilitate the dissemination of the knowledge, promote impactful research, and contribute to the advancement of the research society. And last point is plagiarism. Plagiarism is the use of another word, words or ideas without attribution. The word plagiarism comes from the Latin word for the kidnapper and is considered a form of the theft, a breach of honesty in the academic community. In general, you will avoid plagiarism if you cite the sources, you paraphrase, and if you use words or phrases that are distinctive to your original sources. Alternatively, you can use quotations, marks, and provide a citation to indicate text that is identical to the original sources. Passing off another work as your own is not only a poor scholarship, but also a means that you have failed to complete the learning process. Plagiarism is unethical and can have a serious consequences for your future career. It also undermines the standard of your institutions and of the degree of its issue. Some ways to avoid plagiarism in your writing, like cite your sources, include quotations, paraphrases, present your own ideas, use a plagiarism checker. Some other way to the help to avoid cheating, plagiarism, and other form of the academic dishonesty, like review your syllabus. Faculty includes important information in each syllabus, including expectation for their courses that you are required to follow, like start coursework early, complete work to your own, use campus resources, and put quotation mark at the beginning and end of the copy text. Add an text citation at the end of the quoted text outside the quotation mark. Write in your own words to give context or introducing the quote text. Add the sentences with your own words, the quote and the in-text citation to your paper. So it is an introduction for the above topic. Today we will learn about the academic writing, editing, publishing, and avoiding plagiarism a lot. All of these questions answered we can get by the healthy discussion in this session. So come together, let us all take advantage to this opportunity to grow and learn together. Thank you very much. Over to Danisha. Thank you so much, sir, for that insightful presentation. We are truly grateful for sharing you valuable insights. Now, I would like to invite respected Mr. Abhishek Sarma, sir, Assistant Professor, Faculty of Education at Mahavir University, for today our guest speaker's introduction. Thank you, Danishtha. Very good afternoon to all.
Am I audible to everyone? Yeah, this is Abhishek Sharma. Yes, sir. I'm assistant professor in Faculty of Education at Mahavir University. So it's an absolute pleasure to introduce someone who truly needs no introduction in the field of education, our esteemed resource person for today's conference, Dr. Shweta Rani, with a remarkable career spanning over 30 years of experience in teaching and administration in the field of teacher education with up-to-date knowledge and of government policies, guidance, management, and wide range of teacher development programs. Presently, Dr. Shweta Rani is working as a post of assistant professor, senior grade, Department of Geography, Dayal Singh College, University of Delhi. Dr. Shweta Rani has made a significant impact as an assistant professor of University of Delhi, where she has been at the forefront of masters in geography, MPhil and PhD in geography. While she has a rich and varied teaching experience of almost 12 years at University of Delhi, and her keen research interest includes urbanization and development, advanced statistical methods in spatial analysis, research methodology, geoinformatics, hydrology and water resource management, and sustainable and regional development. She possesses an exceptionally high and commendable academic excellence and achievements. She is a merit rank holder, securing first position at the higher secondary level and topped the stream in graduation from Patna University, receiving Shanti Lata Memorial Award in 2002 and Mother Theodosia AC Memorial Award in 2005. She is also the recipient of Srimati Draupadi Ishwari Prasad Bhargav Memorial Gold Medal for University of Delhi 2008 and awarded fellowship for meritorious students in science by UGC 2012. She grabbed the prestigious award for national level Geographers Youth Conclave for 2 consecutive years in 2019 and 20 as well. Recently, she has been conferred with the prestigious Nari Shakti Best Women Academian Award Awards for Women 2022, followed by GC Memorial Best Research Author Award on September 5, 2022. Dr. Shweta has been immensely recognized and appreciated for her research work and more than 35 research papers to her credit in reputed journals in India and abroad, including her contributions as chapters in editorial books by well known scholars and 5 books. Dr. Shweta also carried out major from ICSSR in capacity of COPI and supervising MPhil and PhD students. She has presented over 60 research papers in several conferences, seminars, workshops in India and abroad, and received numerous awards for best research paper presentations both at the international and national level. She has delivered more than 30 invited talks at different institutions and of higher learning in India. Dr. Shweta has filled and published 16 Indian patents to her credit. She is also a member of several academic committees, geographical bodies, and editorial boards. So, Dr. Shweta Rani is not just an expert, she is a pioneer, mentor, and a source of inspiration. Today, we have the golden opportunity to learn from her, and she takes us on a journey through academic writing, editing, publishing, avoiding plagiarism. So, without further ado, let's give a warm round of applause to our extraordinary guest, Dr. Shweta Rani, ma'am. Thank you. Over to you, Danishta, ma'am. Thank you so much, Abhishek Sarma sir, for your kind information. Ladies and gentlemen, we are fortunate to have with us today some speakers who are noted figures in education field. Each one of them brings their expertise and beliefs
that will indeed make our exploration of the academic writing, editing, publishing, and avoiding plagiarism in artificial intelligence a fruitful and enriching experience. Now, without further delay, let's begin journey into the knowledgeable world in research. I am honored to invite Dr. Sweta Rani ma'am, Program Director, Research Circle, CTPD India, Assistant Professor, Department of Geography, Dayal Singh College, University of Delhi. Our speaker of the day to come and share her valuable views on the topic. We hope that the conference will offer all necessity and inspire us with great perspectives. Please welcome ma'am. Welcome, ma'am. थैंक यू सो मच. थैंक यू दानिश्ता मैम. अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए. And thank you so much, organizers. Thank you so much, Dr. Shivpal, for this wonderful and noble introduction. And a very good afternoon to the participants. I feel extremely privileged, and I am more than happy to conduct a session and to deliver the keynote address in this 10 days online national conference on artificial intelligence in research, recent trends in research, and pathways to ResearchGate, organized by Faculty of Education, Mahavir University, Merit, in collaboration with Principals Association of Colleges of Education, and to engage a session on very important and apt theme that is related to quality publication to journals, and that is academic writing, editing, publishing, and avoiding plagiarism. I'm also extremely thankful and indebted to Dr. Shivpal Singh Ji, Professor and Dean, Faculty of Education, Mahavir University, for giving me this opportunity to be a part of this national conference. So without much ado, let me begin with today's discussion. I've tried to make today's session comprehensible, interesting as far as possible, especially for the research scholars and academicians and the young teachers engaged in research writing. So here I go with some simple and lucid explanations. I've divided today's discussion into two parts. जो पहला part है वो deal करेगा academic writing, editing और publication का, और जो second है और सबसे important है कि हम plagiarism को कैसे रोक सकते हैं. So just allow me a moment to share my screen. Yes, ma'am. I hope this is visible. My PPT is visible Yes, to ma'am. all. Yes, ma'am. It's available. Okay. So let me just begin. The title of today's discussion deals with academic writing, editing, publication, and avoiding plagiarism. So let us first of all try to understand academic writing hota kya hai. So concepts of academic writing. Before coming to academic writing, let us try to understand what is writing. We all are engaged in writing. Writing is one of the primary, you can say, modus operandi of communication. जिसके थ्रू हम communicate करते हैं लोगों से, be it academic or scholarly communication. Now, academic writing की जब हम बात करते हैं, it is potentially the most crucial skill in educational system and the educational environment and in context of academic world. What does it involve? It involves writing which communicates ideas. अगर किसी से हमें अपने ideas को share करना है, we can do through writing. Information and research to the wider academic community. This academic writing, it is a formal way of writing and it must follow some standard conventions. इस conventions के basis पे ही हम academic writing को आगे बढ़ाते हैं. It can be divided into two broad categories. या तो students के context में होता है academic writing, जो हम अपने university में भी जब बच्चों को देते हैं, and what they give us in return is it in the form of an assessment, it is in the form of some assignments, it is in the form of dissertation, some reports that they provide us. And the second and the most important aspect and the part of academic writing is the expert academic writing that we all are engaged in. आप और हम इसमें involved है. It is specially meant for writing publication in academic journals, or you can say. Now, if we go by definition, academic writing can be defined as the writing form that aims to transmit very important scientific, ये word को ध्यान रखना है आपको, because it aims to transmit the scientific or other knowledge through clear and concise means.
दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो आपका जो राइटिंग है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे शुड बी कन्वेड टू द रीडर, एंड इट शुड नॉट बी डन इन अ वेरी इलेबोरेट मैनर, क्योंकि इलेबोरेट मैनर में फिर इंटरेस्ट चला जाता है रीडर का, सो इट शुड बी वेरी ब्रीफ एंड कंसाइज. It is the process of writing analytically. Analytically important है क्योंकि इसके through clear और concise दोनों का amalgamation होता है. And how we can do this? We can do this by breaking down of ideas with the purpose of presenting information that depicts a clear understanding of certain subject. आप किसी भी field से related हो, आप education field से related हो या फिर मैं geography field से related हूँ, academic writing हम सब के लिए बहुत important role play करता है. It is the process of presenting ideas. सबसे पहले हम अपने ideas को present करते हैं, किस तरीके से? In a rational मतलब justified manner. आप logic देंगे अपने ideas को present करने के लिए, और ये ideas जो आप rationally present करते हैं, it should be organized, it should be well organized. That means ये haphazard way में नहीं जाएगा, आपको one after the other it should be organized to reflect your ideas. It should be systematic. And it should be reasonable, because you have to provide reason for every ideas that you are expressing, how? In a logical way. So we can say it is amalgamation of rational, organized, systematic, reasonable, and logic. 5 things together goes for making your academic writing very, you can say, impact. This academic writing enables you to express your ideas and develop them into a written, and you can say structured written format, जिसको हम structured form में लिखते हैं, present करते हैं. That means it is not something which is verbal, it is in a structured written format. Academic writing and scholars. Academic writing हो गया, और एक तरफ हम scholars की बात करते हैं, research scholars या फिर young scholars या फिर young teachers. इन दोनों के बीच में क्या relationship है? So the quality of academic writing strongly influences the reader's perception of the author. सपोज मैंने कोई बहुत बढ़िया पीस ऑफ राइटिंग लिखा और मुझे लगा ये एक स्कोपस इंडेक्स्ड या फिर रूटलेज में पब्लिश हो सकता है, मैंने उसको पब्लिश करा लिया. पब्लिश कराने के बाद मेरे जो आइडियाज हैं वो वाइडर ऑडियंस को रीच किए, और उससे लोगों की एक्सेप्टेंस या लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा आया मेरे आर्टिकल्स पे. सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू इन्फ्लुएंस द रीडर्स परसेप्शन ऑफ द ऑथर. उनका जो परसेप्शन मेरे लिए होगा वो ये रहेगा कि इनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. शायद नेक्स्ट टाइम अगर कोई मैं आर्टिकल लिखूं तो सबसे पहले इट वुड बी रेड बाय माय ऑथर. So it builds my credibility and it builds a kind of perception for me in the eyes of my reader. So this is one of the most important association between a good academic writing and the scholar. The second is it is objective and practical in terms of presentation. Why? Because it needs to be understood by thousands of readers and not just a single person. जब मैं कोई academic writing कर रही हूँ या आप कर रहे हैं, तो आपका और हमारा ये target नहीं है कि it has to reach to just one single person. No, because we have a wider and a large audience. और उन तक पहुंचने के लिए two important criteria that is there. First, it should be objective. It should not be subjective. One-to-one discussion होना चाहिए, because whatever you want to convey, it should be explained in an objective manner and in practical terms. Whatever things you are making your reader understand, it should have some practical implication. The third important thing is that it is highly valued both by academic institutions and academics who wish to acquire knowledge. हम सब नॉलेज को अक्वायर करने के कंटेक्स्ट में हमेशा से तत्पर रहते हैं. हमें लगता है कुछ नया आइडिया मिले, कुछ नई कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले तो हम उसको अमालगमेट करें खुद के अंदर. So as a researcher, I am interested, academic institutions are interested. So both of them value such kind of academic writing. Now, the ability to write academic paper is one of the critical factors that distinguish scholars from excellent scholars. हम किसी scholar को, जैसे मेरे under if 4 PhDs are working, there is one who is just a scholar, I can just say, and 3 of them are excellent scholars. And what makes them different from the first one? It's the kind of their academic writing, their way of expressing things that makes them different. तो अगर यही चीज हम अपने अंदर ले आए, so it will make us different from normal scholars, and we can be tagged as, you can say, excellent scholars. So this academic writing is not just about providing ideas, it's about actually creating them. हम ideas provide नहीं करते हैं, हम ideas नए ideas को carve out करते हैं, नए ideas को create करते हैं और अपने readers तक उनको पहुंचाते हैं.
Now, what are features of academic writing? Academic writing is a kind of, it's a style of writing जिसमें कुछ important inherent features है. फटाफट उनको देखते हैं. So a good academic writing is demonstrated by features. Number one, focused and planned. That means academic writing is done with full focus and proper planning. आप जब भी किसी भी research paper को लिखना चाहते हैं, कोई भी review लिखना चाहते हैं, सबसे पहले you should be focused. You should not getting yourself diverted here and there. आपको focus करना है कि आप actually क्या लिखना चाह रहे हैं. और जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उसको proper plan करिए. And what I feel is planning को you can just note down important points. Like thorough information of fact is added in the academic paper. When we are writing, we give shape to our understanding ideas through some important facts. Like in geography, what we do, if I am talking about urbanization in India and I am intending to write a paper on urbanization, मैं definitely अपने academic writing में अपने research paper में कुछ data provide करूंगी, which are the facts that speaks in themselves and with some diagrams and maps. So all these makes your academic writing properly focused and planned. And the answers are prepared and centered and shows an awareness of the subject. इस तरीके से उसको set करना है कि I am well aware of the kind of scenario that is happening around me related to urbanization in India. The first point is that we must be focused and we must be planned. Second important thing जो आपको ध्यान में रखना चाहिए and which is an important feature of a good academic writing is structure. Your academic writing should be well structured. It should be well structured and it should be consistent and written in a logical order. Every time I'm reiterating that you have to provide logic. आपने जो कुछ भी लिखा है उसका logic होना must है. It should and it must include the points and content linked. आपको justification देना और उस justification के लिए जितने points और contents आपको मिलते हैं वो interlinked होना चाहिए in a structured fashion. The third important under structured is structure is important for writing the whole content with fluency. ऐसा नहीं कि आपने start किया introduction लिखा और फिर आपका वो structure का break हो गया और एक continuity break हो गई. This should not happen. The proper structurization should follow in the entire sequence of your academic writing and there should be fluency. The same kind of language that you are using, it should be fluent enough and it should be very lucid and simple for your readers to understand. आप जो कहना चाह रहे हैं उसको बहुत simple और lucid language में explain करना है. And being structured, it provides legitimacy and sense to your academic writing. आपके academic writing को a kind of acceptance मिल जाता है, legitimacy मिल जाती है once it is structured. The third is evidenced. Evidenced, what does it mean? An academic paper should be evidenced. That means it should be evidence-based. Evidence-based कैसे होगा? Writings without sound research is not considered a good paper. अगर आपको एक अच्छा academic writing लिखना है या फिर अपने आप को indulge करना है एक अच्छे academic paper में, you have to do thorough research beforehand, जिसको हम review of literature भी कहते हैं. और उसके basis पे you decide upon कि what are the already researched areas और कौन सा ऐसा gaps है जिस पे अभी तक लोगों ने काम नहीं किया है, तो उसके basis पे you have to provide new arguments and you have to pose certain research questions. So new arguments and research questions can be framed only when you have done a thorough review of literature that is existent. Good research is considered good evidence and acts as the reliability of that. कभी भी कोई भी research paper आप किसी भी journal में भेजेंगे, आपका review of literature portion should be very, very rich and it should be very strong क्योंकि उसके basis पे आपकी credibility build होती है. This evidence displays an understanding of the subject region. It supports the viewpoints and claims with facts and is correctly referenced. ये सारी चीजें sequence में जाएंगी और उससे आपका knowledge पता चलेगा कि आपके specific region में आपका कितना knowledge है, आपने अपने viewpoint को कैसे explain किया है, उसको proof किस fact से किया है और उसको reference किस तरीके से किया है. So evidence plays an important role as far as features of academic writing is concerned. The fourth is the formal tone and style. This is very important. Academic papers are always written in a formal and decent tone. आप कोई भी उसमें harsh language use नहीं कर सकते, कोई भी slang नहीं use कर सकते. Whatever you want to convey, it should be done in a very decent manner and in a very formal and acceptable language. We can never use loose languages. Loose language को हम कभी नहीं use कर सकते जो हम normal day-to-day life में, जैसे आप और हम अभी discuss कर रहे हैं.
ये लैंग्वेज हम रिसर्च पेपर में नहीं डाल सकते क्योंकि these are considered to be loose languages. It should be well structured, it should be formed, and it should have a style. So what does it do? It actually creates a bad and unprofessional image of writer towards its reader. अगर आप loose language use करेंगे, then whoever is your reader, जब वो आपके आर्टिकल को या आपके रिसर्च पीस को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि एक बैड इंप्रेशन आपके लिए क्रिएट होगा एंड फ्यूचर में आपके किसी भी फ्यूचर रिसर्च पेपर को दे आर नॉट गोइंग टू रीड इट बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि इनका लैंग्वेज बहुत लूज और रफ है. सो यू मस्ट कीप दिस इन माइंड. And what are the advantages of a formal tone? A formal tone has many implications. It should be simple, बहुत simple रखना है. It should be brief, that means to the point, and balanced and uses adequate vocabulary and tenses. ध्यान रखना है आपको कि आप अपने research piece of writing में जो tone और style use करेंगे उसमें there should be adequate vocabulary and whatever tense you are using, it should be consistent in the entire piece of academic writing. Now the next question comes, how to write an academic writing essay. जब हम किसी भी academic writing में indulged है तो क्या-क्या चीजें या क्या-क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए जिससे एक अच्छा academic writing आपके क्रेडिट में आ जाए. So number one, step one is describe the ideas clearly. Whatever idea is coming into your mind, जिसके कारण आपको लगता है कि मैं कुछ लिख सकती हूँ academically, सबसे पहले अपने उन आइडियाज को बहुत क्लियरली आप डिस्क्राइब करें. So we must describe the ideas or whatever topic coming to your mind clearly and make the content reader friendly. आपका जो content होना चाहिए अपने research writing का वो reader friendly होना चाहिए so that reader are they get some interest in reading your research writing. The second step is that create an outline. थॉट आपके दिमाग में आ गया, अपने अपने आइडियाज को थोड़ा डिस्क्राइब किया, लेकिन पहले एक ढांचा तैयार कर लीजिए, a kind of outlining of your entire research writing कि आप किस तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. So how we can do this? We can do this by planning. So we must plan to create an outline of the writing, and this outlining of the writing should be followed consistently. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपने आउटलाइन कर दिया और बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन तैयार किया और मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च राइटिंग इट जस्ट गोज इन वेन. नो, बिकॉज कंसिस्टेंसी अगर पूरे एकेडमिक राइटिंग में रहेगी तो आपका जो टारगेट है एक गुड एकेडमिक राइटिंग वो टारगेट अचीव हो जाए. The third step that you must keep in your mind that you should explain one point in one paragraph. Now, when we are writing some academic work, academic piece of work, बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं. जैसे मुझे अगर इंडिया का अर्बनाइजेशन डील करना है तो अर्बनाइजेशन में ये भी बताऊंगी कि रूरल एरियाज में कितना है, अर्बन एरियाज का क्या सिनेरियो है, सेक्स रेशियो क्या है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो डिफरेंट आइडियाज दैट इज कमिंग इनटू माय माइंड रिलेटेड विद माय ब्रॉडर थीम. उन सब आइडियाज को हम अलग अलग पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे सो दैट द आइडिया गेट्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पैराग्राफ. मतलब एक पैराग्राफ में आप सारे आइडियाज को अमेलगमेट नहीं करेंगे, नहीं तो व्हाटएवर यू वांट टू कन्वे विल गेट जस्ट मिक्स्ड और कंफ्यूज हो जाएगा आपका रीडर. तो यू मस्ट डिसाइड अपॉन कि सारे आइडियाज को, इसीलिए आउटलाइनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so we must help the audience in understanding our point by expressing one point in one paragraph. जैसे ही मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा मुझे क्लियर हो गया कि अच्छा इस पैराग्राफ में जो भी एकेडमिक राइटिंग में इंडल्ज है और जिसने ये पेपर लिखा है वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. पैराग्राफ चेंज मतलब कुछ नए पॉइंट को दूसरे पैराग्राफ में समझा रहा है. More important aspect that you must create short sentences. लंबे लंबे सेंटेंस आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने 3 या 4 लाइन का एक सेंटेंस बनाया, बाय द टाइम आई रीच द थर्ड लाइन आई विल फॉरगेट अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इन द फर्स्ट लाइन. तो हमेशा ये कोशिश करिए अपने एकेडमिक राइटिंग में उसको लॉजिकल, उसको रीजनिंग बनाने के लिए कि आपके सेंटेंस बहुत क्रिस्प और छोटे हों. तो लॉन्ग सेंटेंसेस आर हार्ड टू रीड, एक तो सबसे डिफिकल्ट होता है उनको पढ़ना. Hence, we must try to create short and concise sentences. अपने आप में वो full meaning दे और छोटे छोटे sentences हो, उससे जो आपका reader होता है ना उसका attention भी intact होता है. And 5, we must apply active voice. हम सबने स्कूल में पढ़ा है active and passive voices. तो जब भी आपका research writing हो, academic writing हो, we should always try to use an active voice in our academic writing so that you can relate to the present scenario and it can make an impact to the present situation that you are addressing in your research writing.
types of academic writing, there are basically 4 broad types. We have descriptive, we have analytical, we have critical, and we have persuasive. I'll take them very quickly one by one. Descriptive academic writing, it is out of all the 4, it is the simplest type of academic writing. सबसे simple होता है. इसमें हम क्या करते हैं? It gives information or facts. या तो information provide करेगा, which is in a qualitative form, या फिर facts in the form of quantity of the subject area that you are concerned. For example, I can say summary of a study or report of an experiments result. अगर मैंने अपने स्टूडेंट को कोई फील्ड ट्रिप पे भेजा और बोला बेटा इसकी समरी मुझे आप लिख के लाके दो, तो वो सिंपल समरी जो डिस्क्राइब करेगा उस एरिया के बारे में, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एकेडमिक राइटिंग. या फिर जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस के बच्चे हैं, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसको इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट दे हैव सबमिटेड. So be it in the form of arts, humanities, or you can say science or commerce, whatever, the simplest way of report writing, it is known as descriptive academic writing. Now, इससे next level high आता है analytical academic writing. इस analytical academic writing में, apart from writing the report or summary, what else do? We rearrange the details and facts and sort them into types, groups, categories, parts, or relationship. हम सिर्फ इसमें एक्सप्लेन नहीं करते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते हैं, हम जो मेजर फैक्ट्स हैं उनको भी कैटेगराइज करते हैं अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में, पार्ट्स में या रिलेशनशिप में. जैसे अगर मैं ये बताऊं कि द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर. अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के अलग अलग सिचुएशन है. अगर 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है तो हर जगह डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अलग है. तो इसमें मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी. व्हेन आई एम राइटिंग एन एनालिटिकल एकेडमिक राइटिंग, आई विल प्रोवाइड सम analysis that why the density of population is more in this district and less in this district, और मैं कैटेगरी डिसाइड करूंगी that those states and those union territories जहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है, कहाँ पे मॉडरेट है और कहाँ पे लो है. तो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और हर स्टेट को कैटेगराइज कर दिया. ये 4 स्टेट इस कैटेगरी में है, ये 10 स्टेट इस कैटेगरी में है, ये 25 स्टेट इस कैटेगरी में, विथ प्रॉपर you can say causes that why it is there. So analytical academic writing involves providing analysis for grouping and regrouping. The third is the persuasive academic writing. So in persuasive academic writing, apart from explanation and apart from providing logic and analysis, there is also provision of adding one's own perspective. मैं अपने भी perspective को इसमें डाल सकती हूँ. जैसे मैंने 3 कैटेगरी में बताया कि what are the reasons कि क्यों इन particular categories में ये state fall कर रहे हैं. उस reason को, उस analysis को देने के बाद मैं अपना perception भी डाल सकती हूँ, and that piece of writing is known as persuasive academic writing. And the last type is critical academic writing. Critical academic writing, it has similar features as of persuasive writing, along with at least one individual's point of view. इसका मतलब इसमें अपने point of view को देने के साथ साथ मैं किसी एक इंडिविजुअल का point of view भी डाल सकती हूँ जिसने critically मेरे writing को analyze. So together we have the different types of academic writing, and based on our need, हम किस तरीके का research करना चाह रहे हैं, हम किस तरीके का writing करना चाह रहे हैं, you will decide that इसमें इन चारों में से कौन सा academic writing you will get indulged in. Now, academic writing का जो structure होता है वो basically 3 main sections होते हैं. मैं disaggregate level पे भी आपको ये समझाऊंगी, लेकिन broadly अगर हम deal करेंगे तो एक introduction होता है, एक उसका main body होता है और एक conclusion होता है. इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन एक ऐसा पोर्शन होता है एकेडमिक राइटिंग का जिसके थ्रू हम अपने रीडर्स का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं. सपोज इफ आई वांट टू रीड एन आर्टिकल रिलेटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, व्हिच इज अ हॉट बर्निंग टॉपिक. 2030 में हम सबको अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और मुझे कोई एक एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग मिला, तो मैं सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करती हूँ. एब्स्ट्रैक्ट तो एक रफ आइडिया मुझे मिल जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन पोर्शन में the person who has written that article, academic writing, will introduce the topic, और तभी मुझे पता चल जाएगा कि ये piece of writing is of my interest or not. तो यहाँ पे सबसे important aspect होता है, in your introduction you must grab the reader's attention.
and identify the thesis of paper or the writings. What is the basis? किस basis पे ये पूरा जो academic writing है वो frame हुआ है? It is being highlighted in the introduction portion only. The statement of writing should be illustrated in a single line. What is the need? एक statement में आपको लिखना है nature of problem या फिर significance of study. Statement of problem एक line में आना चाहिए कि what is the basic problem and what is the significance that you have conducted this या फिर you have written this academic writing, so that the purpose of your writing would be clearly stated to the readers. आपका जो statement है वो reader को clear होना चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा आपका ये statement है. If I am interested in that particular statement, तो मैं आगे उस article को पढ़ूंगी, मैं आगे उस academic piece of writing को पढ़ूंगी, otherwise I'll move to some other. So introduction is the first portion and it should be very meticulously and very diligently written. बहुत important aspect होता है. The second part is known as the main body of the academic. This is the main part of the writing and the paragraph written here must be clearly written. बहुत clear होना चाहिए. आपका paragraph में change करते हैं अपने main body. Each initial sentence links the preceding paragraph. एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपने अपने main body को different paragraphs में divide किया है, तो आपने जब first paragraph खत्म किया और second paragraph आप शुरू कर रहे हैं, तो आपके second paragraph का first line should relate to the last line of the first paragraph. That means there should be a continuity and there should be a flow between the paragraphs. ये ऐसा नहीं कि आपने suddenly एक paragraph खत्म किया और कहीं से भी out of way you have started the second paragraph. No, continuity is must. So each initial sentence links the preceding paragraph and the whole section flows very smoothly. आप detailed analysis provide करते हैं, detailed discussion करते हैं. सारा discussion आपका हो गया, then broadly you move to conclusion. So in conclusion, you re-emphasize the thesis and summarize all the main points. The conclusion consists of one paragraph. Ideally, जो आपका conclusion portion होता है academic writing में, what we consider it to be best is just a single paragraph. एक paragraph में अपने अपने सारे final conclusion को reader तक पहुंचा दिया in the form of a final summation. Okay. अगर मैं disaggregate level पे बात करूं और छोटे छोटे sections में इसको divide करूं, then also I can make you very clear कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ते हैं. पहला तो आपका introduction हो गया. जैसे ही आपने अपने topic को introduce किया, आप आएंगे next point conceptual framework. अगर आपका थीसिस कुछ टीचर्स एजुकेशन एंड पेडागोगी से रिलेटेड है, तो जो नॉन एडुकेटर्स हैं, अगर उन्होंने आपके आर्टिकल को पढ़ा तो उनको शायद पेडागोजी वर्ड समझ में नहीं आएगा, एडुकेटर वर्ड समझ में नहीं आएगा. सो ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव and important concepts that you have used in your academic writing, it must be clearly stated and explained to the new readers under the framework of conceptual framework. आपको बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा. जैसे if I do not belong to this particular field and if I am reading an academic piece of writing, उसमें कुछ ऐसे words आ गए जो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी आपके academic piece of writing में just introduction के बाद जाके कोशिश करूंगी खोजने का कि कहीं पे क्या ये words, ये concepts explained है. So a good academic piece of writing is such जो सिर्फ अपने field के readers को cater नहीं करता है, it has a wider audience. और वाइडर ऑडियंस जरूरी नहीं है कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को वो जाने, तो उनको क्लियर करना जरूरी है, तभी उनको आपके एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग में इंटरेस्ट आएगा. The third is the statement of problem. You must explain your reader that what is the nature of problem जिसके कारण आप ये academic piece of writing कर रहे हैं. Okay? और उसके बाद आता है significance of study. आप ये जो academic piece of writing कर रहे हैं या फिर जो एक research paper लिख रहे हैं, इसका क्या significance है? Unless and until it has some significance, why you have indulged yourself in writing? उस significance को state करने के बाद you read a number of research papers, books, articles, और उसको रिव्यू करते हैं. रिव्यू करके देखते हैं व्हाट आर द एग्जिस्टिंग पीस ऑफ लिटरेचर्स अवेलेबल, और उन सब पीस ऑफ लिटरेचर में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट दे हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई या दे हैव ट्राइड टू हाईलाइट. बट उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो मिसिंग होगा, विच इज नोन एज लिटरेचर गैप, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है. और इसी गैप के बेसिस पे आप अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ योर स्टडी एरिया. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मैंने 80 रिसर्च पेपर्स, बुक्स एंड आर्टिकल्स पढ़े, इन सब में बेसिक चीजें ये है, बट जो मेन प्रॉब्लम है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो किसी रिसर्च पेपर में केटर नहीं किया गया है. सो यू हैव गॉट द गैप, और उस गैप के बेसिस पे यू विल बी फ्रेमिंग योर ओन एम्स एंड
ऑब्जेक्टिव्स। जब एक बार आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना लिया, फिर आपको अपना हाइपोथेसिस फ्रेम करना। हाइपोथेसिस इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट व्हिच इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इफ आई डू दिस देन दिस विल हैपन, जिसको आपको अपने रिसर्च राइटिंग में आगे चल के प्रूव करना होगा, बी इट इन द क्वालिटेटिव फॉर्म या फिर क्वांटिटेटिव। वंस आपका हाइपोथेसिस क्लियर हो गया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ गए, अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। आपको जो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, इसके लिए कैसे डेटा आपको चाहिए और ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी सोर्स से करेंगे या सेकेंडरी सोर्स से करेंगे। प्राइमरी सोर्स में द डिफरेंट टाइप्स यू शुड बी नोइंग, द सेकेंडरी में डिफरेंट टाइप्स यू शुड बी नोइंग। एंड वंस यू हैव गैदर्ड द डेटा, उस डेटा के साथ यू हैव टू अप्लाई सर्टेन रिसर्च methodology and some analytical techniques। जैसे आप कार्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, आप क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं, you can use statistical techniques। that means whatever data you have got, उसको कैसे represent करना है for your readers to understand comes within the purview of analytical techniques। what kind of analytical techniques are you going to apply? And this analytical technique varies from subject to subject। जैसे प्योर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें उनका एनालिटिकल टेक्निक्स कुछ और रहता है, फॉर्मूला होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है। हम लोग जो सोशल साइंस को बिलोंग करते हैं, हमारे में हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी अप्लाई करते हैं, हम लोग कार्टोग्राफिकल सिंबल्स भी अप्लाई करते हैं। एज अ जियोग्राफर वी आल्सो यूज मैप्स, क्योंकि मैप्स के बिना हम उन चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। After we have decided upon the analytical techniques, now comes detailed explanation and analysis, which is called the result and discussion। इसको आप अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे based on the themes, और ये सारे themes एक दूसरे से interconnected हो, ये बहुत जरूरी है in order to what to say, maintain a continuity in your academic piece of writing। Once you have done all the discussion and analysis, then you come, क्योंकि आपका डिस्कशन और एनालिसिस होता है ना, वो बहुत डिटेल्ड होता है, और बहुत डिटेल में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। लेकिन अगर मैं क्रक्स में आपसे पूछूं तो वो मेजर फाइंडिंग्स हेडिंग देके आप डालेंगे। व्हाट आर द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ योर एकेडमिक राइटिंग, जिसमें आप बेसिकली सारे पैराग्राफ्स का जो मेन हेडिंग होता है या मेन क्रक्स है, उसको एक एक पॉइंट में लिखते जाते हैं, एक एक लाइन में, so that the basic finding is clear to your reader। Once you have provided the finding, then you will provide your suggestions। आपका definitely कोई suggestions होगा, कुछ recommendations होते हैं, and then you will make your reader understand जो आपका academic piece of writing है, how it can contribute to the growth of people, to the growth of society, and to the growth of government and the policy makers। क्योंकि a good research paper, a good piece of academic writing is one that can actually deal with and that can actually relate with the people। उनके लिए future avenues बनता है, लोगों को कैसे help करेगा। हो सकता है कुछ नया रिसर्च का एवेन्यू खुल के आए लोगों के लिए, कोई नया डायरेक्शन मिले, फ्यूचर डायरेक्शन मिले, सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करेगा आपका एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग। एंड व्हाटएवर यू हैव रिटन, क्या इससे गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो क्या उनको पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प मिल रहा है। Many of the projects that we have done with ICSSR, हम सजेशंस देते हैं गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर स्टडी एरिया लेके कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एंड आफ्टर यू हैव गिवन ऑल दीज थिंग्स, यू एक्चुअली कम टू conclusion, whereby you conclude your study, you like reiterate whatever has been done earlier, and you provide a summary of your academic piece of writing। Once it is done, then we provide references and the appendices that is showing the kind of data and the tabulation। Now there are some key points that everybody should keep in mind while reading and writing the content। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। द फर्स्ट इज द एक्यूरेसी। इन एकेडमिक राइटिंग देयर इज अ नीड टू यूज करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन विद द यूज ऑफ ऑथेंटिक वर्ड्स। तो एक्यूरेसी इज वन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एकेडमिक राइटिंग। सेकंड, डेंसिटी और डेप्थ बहुत जरूरी। There should be a depth and density in the languages that you use, and it must include everybody's point of view। सिर्फ आपका perception हर जगह नहीं जाना चाहिए, because if you want your academic piece of writing to have a wider acceptability, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सबके व्यू पॉइंट को लेना बहुत जरूरी है, including the grammars, including the clauses, the subordinates, the qualifying adjectives, हर चीज को ध्यान में रख के आपको चलना है, and including tenses also। The third is correctness। Correctness is very important।
there should be communication of correct information in a more precise manner. अगर आपने कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ा और वहां से कोई आइडिया आपने लिया जिसको आप अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डाल रहे हैं, तो वही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी एग्जैक्टली एंड करेक्टली रिप्रेजेंटेड टू एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट. उसमें कुछ एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. And fourth is detachment. Detachment means we must focus on our studies central idea. हमारा जो academic piece of writing है, उसका क्या central idea है, उसका क्या main theme है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपने objective को decide करेंगे, ना कि लोगों का क्या perception है और ना कि मेरा क्या perception है. So we must detach ourselves from the audience perception and our perception, and we must only and only focus on the central idea of the academic writing, which is also the central theme. Now, if we take the next point of view, अगर हम significance की बात करें, तो जो भी academic writing हम करते हैं, उसका definitely कुछ ना कुछ significance होता है. क्या होता है? अगर suppose मैंने बहुत बढ़िया कुछ ऐसे 5-6 research papers लिख दिए और वो Elsevier Scopus में accept हो गया और publish हो गया, तो उससे what will happen? It has definitely a significance in the academic world. The first is that it improves the integral thinking skills. वो मेरे integral thinking skills को enhance करेगा. And how it is going to do? It will help to develop intellectual capabilities and cultivate the ability to think critically about different things. मुझे लगेगा मैंने इस टॉपिक पे काम किया और इससे रिलेटेड ये नया आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, तो इट विल एनहांस माय इंटीग्रल थिंकिंग स्किल्स. हो सकता है मैं उससे रिलेटेड किसी एरिया पे कुछ नए तरीके से सोचूं, किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करूं फ्रॉम अ मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड कुछ नया सॉल्यूशंस लेकर के आऊं. तो I'll delve into a new field of research. The first significant impact that academic writing has, that it improves integral thinking skills. The second is it is best for analytical thinking. Analytical thinking means academic writing encourages an analytical mindset. Analytical मतलब analysis आप करते हैं, आपका दिमाग analysis करता है, ऐसे हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, और अगर ये होता तो क्या हो जाए. So based on that, you carve out differently and you think differently and you have an analysis power within yourself. Your mindset becomes very, very analytically rich. So with the power of analytics, you can acquire lifelong skills. ये सब आपके research paper writing के लिए नहीं है, आपके सिर्फ academic writing के लिए नहीं है, आपके entire life में जितने skills आप करेंगे, उन सब में आप you will have an analysis and you will have analytical thinking, keeping in mind the pros and the cons of the solution. The third is that it boosts academic writers' knowledge. Yes, definitely. मेरे knowledge को भी तो boost करेगा ना, जिसने academic writing करी है उसके knowledge को भी enhance करेगा. क्यों? On the basis of providing them the opportunity to be creative and think of ideas that is never heard before. कोई नया idea मेरे दिमाग में आ जाएगा जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा है. A kind of innovation. So I can have that innovative mind. It enhances vocabulary and make the language much more formal so that it can reach to the wider and the large audience. Number 4 significance that it can have, it prepares you for future. So a good academic writing helps you develop strong writing skills, and it can help you assess problems from various perspectives and help you to be ready for future tasks. फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे challenges आएंगे जो हमें और आपको फेस करना होगा. तो ये academic writing is one of the skills that makes us think from different angles कि एक particular problem को ले ले और इसके solution कहाँ से निकल सकते हैं. We just try to present in our academic writing. And this piece of academic writing which you are doing at present makes you prepare for future uses also. Number 5, it helps to grow intellectually. आप और हम intellectually grow करते हैं because academic writings enhance our mental and intellectual capabilities. It also helps in filing your power of observation. हम चीजों को observe करते हैं और उसके बाद उसको analysis and improving our memory by crafting a meaningful and engaging piece. And this is what intellectual is all about. Being intellectual and being intelligent is not that कि हमने चीजों को मगअप कर लिया, रट लिया और एग्जाम में प्रोड्यूस कर लिया. No, that is not intelligence. Intelligence is the power that you have through academic writing, जिससे आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं,
समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर अपने मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, और उसके बाद कोई एंगेजिंग पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग में आप इंडल्ज होते हैं. दिस इज इंटेलेक्चुअल. And number last, academic writing teaches you to manage your time. It is very important. हम जब किसी जर्नल में पेपर भेजते हैं, टाइमलाइन होता है, इस टाइमलाइन के अंदर आपको अपने पेपर भेजने हैं. विद इन 3 months वी आर, या फिर विद इन अ मंथ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ रेस्पॉन्स कि पेपर का क्या सिचुएशन है. 3 महीने के बाद हम आपको बताएंगे कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ. सो दैट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग helps us and it teaches us to manage our time. It helps us to prioritize and manage our time by completing the task within the stipulated time framework. So these are some of the important, significant impacts that a good academic writing has on we researchers. So in a nutshell, academic writing should involve expressing your ideas in response to what you want to convey. And the second, the goal of completing an academic writing or a paper is to show that you have a profound knowledge of a specific topic that enables you to easily share your own thoughts about a scientific question or an issue. It can be an environmental or a social issue also that may be of your and my interest in a logical and sequential manner. These are some of the processes involved. You must first of all know the topic. Once you have known the topic, you read about them, you research about them. How? Through literature review. Then you make an outline and plan and design. Then you start your writing. And after you have written, then you start to review and edit. आपने जब अपने academic piece of writing को लिख लिया, do you think लिखने के बाद आप उसको directly journal में भेज देते हैं? No, we must never do that. Because we are human beings and we are bound to make errors. बहुत बार हमें लगता है हमने जब इस रिसर्च पेपर को लिखा उस समय सिनेरियो कुछ और था, अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है over the period of time. Why am I telling? Because I take at least 6 to 9 months to write a research paper. और जब मैंने शुरू किया और जब मैंने उसको खत्म किया, उस बीच में कुछ सिनेरियो चेंज हो जाता है. So it is at that time that after you have finished your research writing, you must review it. और आपको उसमें एरर्स नजर आएंगे ही आएंगे. एंड हियर कम्स द टास्क ऑफ एडिटिंग. सो एडिटिंग कम्स आफ्टर एकेडमिक राइटिंग हैज बीन डन. सो नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड एस्पेक्ट व्हिच इज एडिटिंग. एडिटिंग और पब्लिशिंग को मैं थोड़ा क्विक करूंगी क्योंकि मैं प्लेजरिज्म के ऊपर काफी फोकस करना चाहती हूँ एकेडमिक राइटिंग के बाद. तो व्हाट इज द नीड ऑफ एडिटिंग इन एकेडमिक राइटिंग? Once academic writing is done, एक बार आपने academic writing लिख लिया, there is scope of review and edit. हम सबको review करना चाहिए और अपने लिखे हुए academic piece of work में हमें बहुत सारे errors नजर आएंगे या changes लगेगा which has not been taken care earlier, तो उसको edit करने की जरूरत पड़ती है. So editing in academic writing is the vital process for what? For refining the content. आपने जो लिख लिया उसको आप फिर से रिफाइन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं फॉर क्लैरिटी, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए. जब मैंने लिखा तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो एक्सप्रेस हो पा रहा है या नहीं, कि मैं सिर्फ लिखने में इंडल्ज थी. अब मैं जब उसको दोबारा खुद से पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं जो कहना चाह रही हूँ वो मेरे राइटिंग में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है. सो देयर इज नो क्लैरिटी. सो व्हाट आई डू, आई ट्राई टू एडिट माय राइटिंग. So in order to have a clarity. दूसरा करेक्टनेस. करेक्टनेस में मुझे ये लगेगा अच्छा मैंने इसमें तो पास्ट टेंस यूज कर दिया, लेकिन ये तो मैं प्रेजेंट में काम कर रही हूँ, करेक्ट नहीं है, कुछ सही नहीं जा रहा है. एंड एन ओवरऑल क्वालिटी, प्रोवाइडिंग अ पॉलिश्ड टोन टू योर वर्क. पूरा ओवरऑल क्वालिटी आपका बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पता नहीं आप सब में से कितने लोग इस चीज को जानते हैं कि जब हम किसी भी अच्छे जर्नल में रिसर्च पेपर भेजते हैं तो उनका जो टाइम फ्रेमवर्क होता है उस 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो हमें ये बताते हैं कि क्या वो हमारे वर्क को रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे, या किसी पीयर रिव्यू प्रोसेस के लिए भेजेंगे, उस लायक भी है ये काम या नहीं. बाकी पीयर रिव्यू जब होगा तब जो रिव्यूअर्स है उनके कमेंट आएंगे और फिर आपका पेपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा. लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है वो आपके इस रिसर्च पेपर के क्वालिटी को, क्लैरिटी को, करेक्टनेस को देख के वो डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज इवन लायबल टू बी टेकन फॉर रिव्यू. इस समय वो जो क्विक ग्लांस करते हैं यही सब चीजों को देखते हैं, जिसके बेसिस पे आपको 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ये रिस्पॉन्स देते हैं कि आपका पेपर हम रिव्यू के लिए भेजेंगे या नहीं, उस लायक है या नहीं. Second important aspect of editing is that it ensures your writing shines by eliminating errors.
आप जब एडिट कर लेंगे तो वॉट एवर यू हैव रिटन, डोंट यू थिंक कि आपका वो राइटिंग शुड एक्चुअली शाइन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड रिफाइनिंग सिंटैक्स एंड द टेंसेस। जितने भी टेंसेस आपने यूज किए वो सब जब रिविजन करते हैं, जब रिव्यू करते हैं, तो आप अपने एरर्स को उस समय एडिट कर पाते हैं। सो एडिट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ academic writing that follows after you have written your academic piece of work. Third is, even if your writing seems flawless, आपको बहुत बार लगता है मैंने बहुत अच्छा लिख लिया, इतना अच्छा तो कोई भी नहीं लिख सकता, अब तो बस इसको जर्नल में भेज देना है, then also editing is essential for a seamless reading experience. आपका लिखना और सामने वाले का पढ़ना, there should be a relationship between them. तो आपने जो लिखा उसको खुद पहले पढ़ के देखिए कि क्या आप उसको सीमलेस पढ़ पा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक. इफ यू कैन डू इट, सामने वाले को भी सेम एक्सपीरियंस मिलेगा. बट इफ यू आर फाइंडिंग सम एरर ड्यूरिंग रीडिंग योर ओन पीस ऑफ राइटिंग, तो सामने वाले को भी वही प्रॉब्लम आएगी. इसीलिए अगर आपको ये लगता है आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को जज ना करें, उसको पढ़ के देखें और जहां जहां एरर नजर आ रहा है प्लीज उसको एडिट करें. Okay, because the perception of a writer and a reader varies. So after you have written, you have to become reader of your own academic piece of writing and judge your writing. And if found error, you have to do editing. If तो word मुझे use नहीं करना चाहिए क्योंकि errors आते ही आते हैं. हो सकता है फर्स्ट एडिटिंग के बाद आपको सेकंड एडिटिंग की भी जरूरत पड़ जाए. Many a time it happens कि आप जब अपने रिसर्च पेपर को आपने अपने लेवल पे एडिट कर दिया और आपने उसको एक अच्छे जर्नल में भेज दिया और वहां से वो एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद वो देते हैं एक्सेप्टेंस विद मेजर करेक्शंस. बहुत सारा आपका करेक्शंस है, उसको आपको फुलफिल करना है, प्लस उनका जो फॉर्मेट स्टाइल है रिसर्च पेपर का उसके अकॉर्डिंग आपको इसको एडिट करना है, जो आपके रिसर्च पेपर में नहीं. लेकिन एक बार एक्सेप्ट तो होने दीजिए. वो एक्सेप्ट तब होगा जब आप एज अ रीडर कैन गिव जस्टिफिकेशन टू योर ओन एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग. So the primary goal of editing is to enhance the readability. Readability मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आर्टिकल को पढ़ पाए. आपको इस तरीके का अपना academic piece of writing रखना है और उसको उस तरीके से edit करना है. And impact of the written work ज्यादा होना चाहिए, ensuring that it effectively communicates the intended messages to the reader. क्योंकि टारगेट यही है कि आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं अपने academic piece of writing में करेक्टली वही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके रीडर को भी ट्रांसमिट हो. मतलब ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में कुछ और आइडिया है लेकिन लिख रहे हैं आप समथिंग डिफरेंट. सो समथिंग डिफरेंट विल गेट कम्युनिकेटेड टू द रीडर. सो एडिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Editing is important in academic writing. Why? Because it enhances the readability and impact by refining and polishing the work. आपके वर्क को और ज्यादा वो refine और polish करता है. Second, it catches the spelling, the punctuation and the grammatical errors जो writing के समय हम identify नहीं कर पाते हैं because we are in a flow of writing. Third, it improves clarity. आपके concept को एक clarity देता है और उसी clarity के साथ आपके reader तक ये पहुंचना चाहिए. The organization of your write-ups, जो आपने लिखा है उसको एक proper sequential manner में वो organized है या नहीं वो editing के समय decide होता है. And the style, जिस स्टाइल में all of us have a unique style of writing, हम सबका स्टाइल अलग है. जिस स्टाइल में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसी स्टाइल में हम अपने कंक्लूजन को भी खत्म करते हैं. तो मेक श्योर आपके स्टाइल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और वो तब होता है जब एक से ज्यादा लोग उस एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं. इसीलिए इफ यू आर व्हेन कोलैबोरेटिंग विद अदर ऑथर्स, मेक श्योर कि राइटिंग कोई एक इंसान ही करे. दूसरा इंसान मैप्स बना सकता है, कोई डेटा ला सकता है, कोई रेफरेंसिंग कर सकता है. So that contribution comes in a joint fashion, but the writing should be done. Expressing of idea should be done in one single style. क्योंकि आपके जो जर्नल्स होते हैं और जर्नल्स में जो रिव्यू प्रोसेस होता है ये इन चीजों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं. एडिटिंग ऑल्सो मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग. आपके स्ट्रक्चर में कुछ कमी है तो एडिटिंग के समय आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड इट लीड्स टू अ बेटर फाइनल प्रोडक्ट. और इस एडिटिंग के कारण व्हाट वाज अर्लियर एंड व्हाट इज योर एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग आफ्टर एडिटिंग becomes totally different and now it is in a presentable form. और अब इसको आप किसी भी जर्नल के लिए सबमिट कर सकते हैं फॉर पब्लिकेशन. सो वी कैन से इन अ नटशेल अगर क्विकली इसको देखें, इट गारंटीज प्रेसिशन एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ रिसर्च. आपका रिसर्च पे आप कितना डिपेंड कर सकते हैं. इट इंप्रूव्स क्लैरिटी, कोहेरेंस, दैट इज रिलेशनशिप एंड इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च. आपका जब ये रिसर्च पब्लिश होगा तो कितना इम्पैक्ट होगा जनरल
society पे. It ensures research is original and ethically sound. Ensures adherence to academic guidelines and standards. हर एक academic writing में कुछ guidelines होते हैं हमें जिसको follow करना है, जिसको हम ethical considerations भी कहते हैं, जो हम plagiarism वाले section में deal करेंगे. And it ensures that the research is plagiarism free. ये वाला एक important portion है जो आप अपने रिसर्च पेपर को जब भेजते हैं पब्लिकेशन के लिए, उसके पहले आप उसका प्लेजरिज्म टेस्ट करते हैं, जो हम पब्लिकेशन इसके बाद वाले सेक्शन में पब्लिकेशन और प्लेजरिज्म को साथ साथ लेके चलेंगे. Okay. The third aspect of today's discussion, after academic writing and editing comes academic publishing. हम सबके दिमाग में कुछ आइडिया निकल के आया, हमने उस आइडिया को फ्रेम किया, उसको आउटलाइन किया, उसको शेप किया, डिजाइन किया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किया, उसके पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, और हमने अपने एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग को एक फाइनल शेप दी. फिर हमने क्या किया, दोबारा से खुद से पढ़ा और पढ़ के देखा बहुत सारे एरर्स नजर आए, हमने उसको एडिट किया. एडिट करने के बाद नाउ वी आर रेडी कि हमारा पीस ऑफ वर्क इज ओके, अब हम इसको भेज सकते हैं फॉर व्हाट, फॉर पब्लिशिंग. बिकॉज आपके जो भी आइडियाज हैं जिनको आपने लिखा विथ अ वेरी प्रोफाउंड सेंस ऑफ नॉलेज और बाद में उसको एडिट भी किया, वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? नॉट बाय कीपिंग इट और रेस्ट्रिक्टिंग इट टू योरसेल्फ, बट बाय गेटिंग इट पब्लिश्ड. पब्लिश्ड होगा तो वाइडर ऑडियंस को एक्सेस हो पाएगा. लाइक रिसर्च गेट इज वन ऑफ द यू कैन से प्लेटफॉर्म जहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जो रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश होते हैं वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, so that we can read them and we can also imply some of the ideas, we can cite them. तो उनका citation बढ़ता है, उनके H index, I10 index ये सब बढ़ते जाते हैं. So definitely you would also like कि आपका जो academic piece of writing है वो publish हो. And publication is the ultimate aim of whatever we think, whatever we write, whatever we innovate, so that it can benefit the society. हम पब्लिश इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों को लगे हम कितने अच्छे रिसर्चर्स हैं और हमने कितना अच्छा रिसर्च किया. हमारे रिसर्च का एक सिग्निफिकेंस होता है, हमारे रिसर्च का एक व्हाट टू से एक आउटकम होता है, एक फ्यूचर डायरेक्शन होता है. सोसाइटी को कैसे हेल्प करेगा, लोगों को कैसे हेल्प करेगा, गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करेगा. लाइक आई हैव डन वन प्रोजेक्ट अंडर ICSSR सिद्धार्थ नगर, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, विच इज एग्रीकल्चरली बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर, वहां पे 93% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, लेकिन वहां पे लेवल ऑफ पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा. तो हमने उस रिसर्च के थ्रू ऐसे ऐसे सजेशंस गवर्नमेंट को सजेस्ट किए हैं कि आप ये टेक्निक्स वहां पे लेके आइए, इस सीजन में ये क्रॉपिंग पैटर्न रखिए, सो दैट द फार्मर्स दे कैन बेनिफिट, और जितना ज्यादा वो आउटपुट लेंगे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो उनकी पॉवर्टी लेवल डाउन होगी. सो योर रिसर्च, तो वो लोगों को कैसे पता चलेगा? अनलेस एंड अंटिल आई सबमिट माय रिपोर्ट एंड ICSSR publishes it in the form of paper, so that government can also get benefited. So academic publishing is one of the important aspects after academic writing has been done and editing has been done. And this is what publishing is, the activity of making information. कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई लिटरेचर हो सकता है, कोई म्यूजिक, कोई सॉफ्टवेयर और एनी अदर कंटेंट दैट इज अवेलेबल टू पब्लिक फॉर सेल और फ्री ऑफ चार्ज. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी आर्टिकल को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू बाय इट. तो ईदर इन दैट फैशन बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारा source of information is free of charge. So when it is made available to general public in the form of displaying, it becomes publishing. So publishing plays a pivotal role in academic world. As far as हमारा जो academic world है concerned है, इसमें publishing बहुत important role play करता है. It serves as a cornerstone for dissemination of knowledge, that is transmission of knowledge. Fostering intellectual discourse, जहाँ पे हम आपस में discussion कर सकते हैं अपने व्यू पॉइंट्स को, and contributing to the continuous advancement of various fields of study. जैसे ज्योग्राफी में अगर मैंने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे काम किया तो मेरा जो रिसर्च है जब उसको पब्लिश किया गया तो उससे और भी फ्यूचर रिसर्चर्स को एक डायरेक्शन मिलता है और एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफ नॉलेज एनहांस होता जाता है. इसीलिए पब्लिकेशन जरूरी है. Academic or scholarly publishing is a way of creating a record of research. आप जैसे जैसे publish करते जाते हैं, record of research बढ़ता जाता है, and it actually gives an idea of the research efforts that helps to advance knowledge and preserve the work for future use. Future में आपके work को refer करके कुछ और नया काम
हो सकता है, इसीलिए उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है, और रिकॉर्ड में तब होगा जब आप इसको एक ऑथेंटिक सोर्स में पब्लिश करेंगे। So academic publishing is also a mechanism for you as an author to be recognized. ये आपको भी एक recognition दिलाता है for the contributions that you have made to your field of study. Like in our field, there is a book by Professor R. Ramachandran, which is considered to be an iconic book. कोई भी बच्चा जो urban study करता है, उसको as a base book उसको समझना पड़ेगा basic concepts of urbanization. तो उनकी recognition as a contribution to urbanization has been identified by the future researchers. Importance of publishing in academia. Academia में क्या क्या important है? पहले तो हम प्री राइटिंग करते हैं, फिर हम ड्राफ्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं, एडिट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, और लास्ट में हम उसको पब्लिश करते हैं. तो पब्लिशिंग में वी आर शेयरिंग नॉलेज एंड एडवांसिंग द फील्ड ऑफ स्टडी, जिस फील्ड को भी हम बिलोंग करते हैं. रिसीविंग फीडबैक एंड पीयर रिव्यू, ये बहुत जरूरी है. आपने लिख लिया, ठीक है, लिखने के बाद आपने उसको एडिट कर लिया, अब आपने उसको पब्लिश किया. आप जब पब्लिश करेंगे और लोग उसको पढ़ेंगे, तभी तो वो आपको फीडबैक दे सकते हैं, एंड दे कैन प्रोवाइड यू सम रेटिंग्स. फीडबैक कि आपने जो लिखा उसमें ये प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ दीज आर द एडवांटेजेस. व्हाट वी डू, हम जो अपने एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग को जब प्रोसेस करते हैं, तो वन थिंग दैट आई हैव एडवोकेटेड कि आपको लिटरेचर रिव्यू करना है. लिटरेचर रिव्यू आप कहाँ से करते हैं? ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क, जो लोगों ने काम कर लिया है और पब्लिश कर लिया है, आप उसको पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे आप एक रिव्यू तैयार करते हैं. आपका जो काम है उसके बारे में लोग अपना रिव्यू तब देंगे व्हेन इट इज पब्लिश्ड. सो एंड दे विल गिव यू रिव्यू एंड दे विल गिव यू देयर फीडबैक कि इसमें ये मेरिट्स है, ये डिमेरिट्स है, ताकि फ्यूचर में आप जब अपना नेक्स्ट एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग करें तो उसमें उन प्रॉब्लम्स को आप टेक केयर करें. सो इट हेल्प्स अस टू रिसीव फीडबैक एंड पीयर रिव्यू process. It also helps in career advancement and professional recognition, as we all know. Together we are knowing this. And last, it is contributing to the collective body of vast field of knowledge. Definitely ये तो करेगा ही, क्योंकि जो existing knowledge है और जिस फील्ड से आप और हम belong करते हैं, उस फील्ड के knowledge को ये enhance करेगा through your way of academic contribution, which is being published. Publishing vis-a-vis avoiding plagiarism. Next area that I'm coming is plagiarism, but ये plagiarism is very much related with publishing, क्योंकि जब तक आपका academic piece of writing after you have done editing, जब तक ये plagiarism free नहीं होगा, it cannot get to the publication agency, and you as a researcher must ensure कि आपका academic piece of writing is plagiarism free. मुझे नहीं लगता कि अगर आपने खुद से अपने आर्टिकल को लिखा है तो आप ये 100% श्योर होते हैं कि इसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा, लेकिन फिर भी खुद को अश्योर करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपने आर्टिकल को रन करते हैं, एंड इट गिव्स यू द लेवल ऑफ ओरिजिनलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्लेजरिज्म इज 10% एंड बिलो. क्योंकि बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर होती हैं जो अगर आपने कहीं से कोई लाइन ली है और अगर 5 वर्ड्स कंसेक्यूटिवली सेम आ गया तो वो पूरे लाइन को प्लेजराइज कर दे. दो द आइडिया मे बी ऑफ योर ओन, लेकिन आपने जहां से लिया तो वो 5 वर्ड कॉपी है. इसलिए 10% का एक थ्रेशहोल्ड लेवल हम लेके चलते हैं, और उसके नीचे अगर है then it is acceptable for academic publishing. So there is a very close correlation, I can say, between academic writing, plagiarism, and publication. A good academic writing, after review and editing, calls for avoidance of plagiarism of any sort. किसी भी तरीके का plagiarism नहीं होना चाहिए, and has a higher chances for it to get accepted in a fruitful and meaningful publication agency. तभी उसके chances ज्यादा होते हैं. So let us try to understand what is plagiarism. Plagiarism किसको कहते हैं? And there is a lot of confusion among the mind of researchers, young teachers, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने जब इसको plagiarism में डाला, plagiarism level higher. तो ये होता क्या है और इसको किस तरीके से हम avoid कर सकते हैं? See this is a kind of छोटा सा iconic picture जो मैंने यहाँ डाला. एक कंप्यूटर है. कंप्यूटर मैंने जानबूझ के डाला कि कंप्यूटर में से मोस्टली हम गूगल पे जाते हैं, वहां से आइडियाज उठाते हैं, स्नैपचैट से आइडियाज उठाते हैं. So this person is just taking the idea. This wall is actually reflecting idea from the computer and putting it into your own piece of academic writing. This should not. आप थोड़े concepts ले ले, लेकिन आइडियाज आपके अपने और इनोवेटिव होने चाहिए. आप किसी और के आइडियाज को उठा नहीं सकते. So to plagiarize is a verb which means to use someone else's
वर्ड और आइडियाज, आप किसी के वर्ड को उठाएंगे जो ऑलरेडी किसी ने दे दिया, पब्लिश कर दिया, किसी के आइडिया को लेंगे, किसी के थॉट को लेंगे, किसी के टेक्स्ट को उठाएंगे, किसी का मटेरियल या रिसर्च रिजल्ट को उठाएंगे. ऑल दीज कम्स विद इन द पर्व्यू ऑफ plagiarism. This is what which is known as to plagiarize. To steal or to pass on information without giving due credit to the original source. अगर आपने किसी के आइडिया को लिया और उसको अपने फील्ड में अप्लाई किया, जो उनके फील्ड में अप्लाई था, आपका नया फील्ड है, आप अपने फील्ड में उस आइडिया को अगर अप्लाई कर रहे हैं और उस इंसान को क्रेडिट दे रहे हैं, then it is not considered to be plagiarism, because you are just taking idea, giving due credit to that person. But most of us, what we do, we just copy the text, we just copy the ideas from internet, from Snapchat, and we just forget about that person. This is academic stealing. इसको हम academic चोरी कहते हैं, which is unethical. It's taking the credit for someone else's work, which goes against the rule of academy. किसी और के काम को आप अपने नाम पे ले लेते हैं, पब्लिश करा लेते हैं, and this is not what academia is all about. Academia goes by certain ethical and logical considerations which we must all follow. What is plagiarism? अगर हम इसके definition के वाइज चले तो to commit literary theft. theft मतलब चोरी, ऐसी चोरी जो literary होती है, जो academic world की होती है. To present an idea or product as new and original derived from earlier published existing sources. आप इसको अपने नाम पे पब्लिश कराते हैं, ऐसा कहे कि ये एक नया आइडिया है, एक नया प्रोडक्ट है जो पहले किसी ने नहीं प्रपोज किया है, लेकिन ऑलरेडी इट इज डन, यू आर जस्ट टेकिंग. दिस इज प्लेजरिज्म. Quoting is not banned. When I am asking you not to indulge in plagiarism, I do not say कि आप किसी के quotes को मत उठाइए. अगर किसी ने कोई quote दिया है and if you are liking it, quoting is not banned, but the author must be named and referred. कहीं पे भी अगर हम किसी के भी quotes को, किसी के scholar के quotes को लेते हैं, quotes के नीचे हम उसका नाम जरूर लिखते हैं, because it is their saying and they are saying whatever they have said has some relevance to our present academic writing, so we have just written it down. Okay, see, this is again two person are here. एक ने ऑलरेडी आइडिया रख लिया, उसके दिमाग में बड़े सारे आइडियाज जा रहे हैं, दूसरे के दिमाग से निकला, उसके आइडिया को उठा के खुद में डाल के. This is just an picturesque way of representation, that taking away somebody else's idea and putting it in your own word, it is something which is known as plagiarism. So plagiarism is, and you can say, unethical affair. Plagiarism is unethical. Why? Because of three reasons. तीन चीजों के कारण हम plagiarism को unethical मानते हैं. Firstly, it is unethical because it is a form of theft. ये एक तरीके की चोरी है जो हमें नहीं करना चाहिए. बचपन से हम सबको सिखाया गया है चोरी नहीं करते. तो चोरी करना is not only getting the physical stuff from somebody's houses. It's all getting the, you can say, immaterial things, somebody's idea, somebody's product. That is also a theft which should not be done. By taking the ideas and words of others and pretending they are their own, आपका अपना है, ऐसे pretend करिए, you are stealing someone else's intellectual property. आपके पास खुद का भी intellectual property है, उसको अप्लाई करो, आप उसके आइडियाज को लेके अपने फील्ड में अप्लाई करिए, नए वर्ड्स दीजिए, थोड़े कॉन्सेप्ट्स you can always take from internet, थोड़े कॉन्सेप्ट्स, थोड़े आइडियाज, so that based on those concepts and ideas you can frame your own set of research. वो आपको एक बेस बना के हेल्प करे आपके आइडियाज को लाने में, लेकिन exactly word to word उठाना is not allowed. Secondly, it is unethical because the plagiarizer subsequently benefits from this. जो plagiarizer होता है, जिसने plagiarism किया है, किसी के आर्टिकल को उठा के पब्लिश किया है और पब्लिश करके उसने प्रमोशन ले लिया, तो उसका एक बेनिफिट हो गया. It is unethical. Why? Because अपने काम को ना क्रेडिट, अपने काम का क्रेडिट ना लेके दूसरे के काम का क्रेडिट लेकर आपने अपना पर्सनल बेनिफिट किया है, which is not. And the third, a degree is evidence of its holder's ability and knowledge. If a student gains employment on the basis of a qualification they have not earned, they may be at risk to others. Suppose अगर किसी एक particular field में the basic criteria is that कि assistant professor के job के लिए आपको minimum 7 research papers होना चाहिए. आपने क्या किया? 7 research papers publish करा लिया, taking somebody else's idea, और आप उस job में चले गए. But there is always a risk of
अनसर्टनिटी इन योर माइंड कि फ्यूचर में अगर इसका प्लेजरिज्म टेस्ट हो जाए और ये डिटेक्ट हो जाए, सो आई वुड बी एट रिस्क टू अदर्स. सो इट इज नॉट अलाउड. प्लीज डोंट गेट indulge in all these activities. Now, what is nature of plagiarism? Plagiarism can take many forms. बहुत सारे फॉर्म होते हैं. From deliberate cheating, मतलब जानबूझ के चीट करना, to accidentally copying from a source without acknowledgement. बहुत बार ऐसा होता है. When I am telling you that do not get indulge in plagiarism, I am not telling कि आप जानबूझ के कर रहे हैं. दो तरीके का इसका नेचर होता है. या तो आप जानबूझ के इंटरनेट पे जाके उस पर्टिकुलर टाइटल से रिलेटेड जो भी काम है उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया. बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली हमने किसी चीज को कॉपी किया और जहां से कॉपी किया उसका एक्नॉलेजमेंट या उसको साइट करना भूल गए. गलती हो गई हमसे, लेकिन वो गलती जो हमने किया, द थर्ड पर्सन इज नॉट नोइंग, इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्लेजरिज्म. तो दोनों तरीके से अगर आपने किसी के काम को लिया और उसको साइट नहीं किया, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, then it is a form of academic stealing, which is known as plagiarism. Consequently, whenever you use the words or ideas of another person in your own work, you must acknowledge where they came from. आपको बताना पड़ेगा. Suppose अगर मैंने लिया the level of urbanization in India according to 2011 census was 32%. मतलब इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं उसमें से 32% अर्बन एरियाज में रहते हैं. ये मेरा कोई रिसर्च नहीं है. मैंने जाके घर घर काउंट नहीं किया या ये नहीं देखा कि शहरों में कितने लोग रहते हैं. ये डेटा काउंट किया सेंसस ऑफ इंडिया ने, तो मैंने वहां से इस डेटा को उठाया. सो आई एम गोइंग टू राइट सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया 2011. 2011 के सेंसस में सेंसस ऑफ इंडिया ने इस डेटा को पब्लिश किया. तो ये मेरा नहीं है. हाँ, डेफिनेटली इस 32% को लेके मैं कुछ अपने स्टडी में यूज कर सकती हूँ बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, बट आई हैव डेफिनेटली गिवन द सोर्स. अगर मैंने किसी और के आइडिया को लिया और उस आइडिया को अपने रिसर्च में अपने तरीके से नए इनोवेटिव वे में अप्लाई किया, तो आई विल यूज दैट इनोवेटिव वे, बट उस आइडिया को मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगी उस पर्सन. ओके, व्हाट डज प्लेजरिज्म लुक लाइक? प्लेजरिज्म दिखता कैसा है, कैसा होता है? ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ चीजें हैं. इट एक्चुअली हैज सम शेप एंड साइज. सो इट इज कॉपीइंग समवन्स वर्क. किसी के काम को आपने कॉपी किया. दिस इज प्लेजरिज्म. You fail to cite a source. आपने कहीं से कोई डेटा उठाया और उसको साइट नहीं किया, उसके सोर्स को मेंशन नहीं किया. This is plagiarism. Improper citing of the source. आपने कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लिया और उसको साइट किया लेकिन आधा साइट. तो साइटेशन ऐसा होना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर मुझे इंटरेस्ट है कि वो डेटा आपने कौन से साइट से उठाया, किसके काम को लिया, तो प्रॉपर साइटेशन शुड बी देयर. इम्प्रॉपर साइटेशन इज ऑल्सो comes within the purview of plagiarism. Fourth is formation of false sources. This is very bad. अगर आपने कहीं से कोई आइडिया ले लिया लेकिन उसको आपको उसका सोर्स नहीं मिल रहा, आपने खुद से एक नया सोर्स तैयार कर दिया और लिख दिया. नेवर डू दैट, बिकॉज जब आप उस पेपर को भेजेंगे, उस एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग को कहीं पब्लिकेशन के लिए देंगे और किसी को उस डेटा में इंटरेस्ट है, दे विल टेक दैट सोर्स एंड दे विल ट्राई टू डू एन इन डेप्थ एनालिसिस कि इस सोर्स में और क्या क्या डेटा है. और जब वो उसको सर्च करेंगे, दे विल कम टू नो दिस इज प्लेजराइज्ड, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन आपने डाला है. दिस इज ऑल्सो प्लेजरिज्म. एंड लेबलिंग somebody else's work as yours. जैसे अगर मैंने कोई मॉडल उठाया, वॉन थ्यूनन का एग्रीकल्चरल मॉडल, जिसको मैं रूरल एरियाज ऑफ बिहार में अप्लाई करना चाहती हूँ, तो वो मॉडल मेरा नहीं है. वॉन थ्यूनन ने बहुत पहले अप्लाई किया, लेकिन मैं उस मॉडल को दूसरे कंटेक्स्ट में अप्लाई कर रही हूँ. सो आई डेफिनेटली गिव क्रेडिट वॉन थ्यूनन. अगर वॉन थ्यूनन की जगह मैंने उस मॉडल में अपना नाम लिख लिया, दिस इज प्लेजरिज्म. तो प्लेजरिज्म इस तरीके से कुछ नजर आता है. दैट मीन्स यू कैनॉट कट, यू कैनॉट पेस्ट. कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी जो आपका ऑप्शन होता है कंप्यूटर में, उसको नहीं अलाउ करेंगे, उसको नहीं यूज करेंगे. यू हैव टू, यू कैन जस्ट टेक थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा बेस फॉर्म करने के लिए. और इसको प्लेजरिज्म नहीं कहते, ये रीडिंग ऑफ रिव्यू लिटरेचर्स. आप लिटरेचर्स पढ़िए, लोगों के काम को पढ़िए, पढ़ के देखिए क्या क्या उन्होंने इस फील्ड में किया है और उसमें से गैप निकालिए, क्या नहीं किया है, और उस बेसिस पे अपने आइडियाज को आप आउटलाइन करें और शेप करें. सो प्लेजरिज्म, what is it and how to avoid it? Steps to learn about plagiarism. It is important to know what plagiarism is and what form it takes, जो हमने अभी देखा. It is also important to know how plagiarism happens. जो हमने देखा कि एक्सीडेंटली भी हो जाता है, बहुत बार हम इसको डेलिबरेट भी करते हैं. Many students who plagiarize do so unintentionally. इंटेंशन नहीं होता उनका कॉपी करना, बहुत बार उनसे अनइंटेंशनली ये चीजें हो जाती. Often
because they don't have the academic skills to avoid over reliance on the work of others. सपोज मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है और मुझे एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग करना है, तो मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ अपना दिमाग लगाओ, दो चीजें होती है, या तो दिमाग है जिसको लगाना है, या तो वो है ही नहीं, दैट मीन्स आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एकेडमिक स्किल। तो जब मेरे पास वो एकेडमिक स्किल ही नहीं होगा एकेडमिक राइटिंग के लिए, तो मेरे पास जो अल्टीमेट ऑप्शन लेफ्ट है वो यही है, इंटरनेट पे जाओ, कॉपी करो, पेस्ट। सो दिस इज नॉट दैट, बिकॉज दे आरंट श्योर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स प्लेजरिज्म। बच्चों को ये पता ही नहीं है प्लेजरिज्म होता क्या। उनको असाइनमेंट दिया गया और असाइनमेंट का टॉपिक उन्होंने लिया, गूगल पे गया, चैट जीपीटी पे गया, वहां पे डाला और जो भी कुछ कंप्यूटर ने दिया उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। जब वो लेके आए एंड व्हेन यू रीड देन यू सी कि ये तो तुम्हारा लैंग्वेज है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये एकेडमिक स्किल नहीं है, दैट मींस यू हैव कॉपीड फ्रॉम समवेयर। देन दे विल से कि अच्छा मैम वी कैन नॉट टेक फ्रॉम देयर। दे आर नॉट कंफर्म, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आखिर ये प्लेजरिज्म होता क्या है। सो माय होल पर्पस इन टुडेज डिस्कशन टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड इज दैट जब भी आप अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में अपने बच्चों को कोई असाइनमेंट दे, जस्ट डोंट टेक इट एज इट इज, मेक देम अंडरस्टैंड कि ये प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, और प्लेजरिज्म क्या है उनको इसी लेवल पे आप सिखाइए। आई नेवर एक्सेप्ट, मैं हमेशा सॉफ्ट कॉपी लेती हूँ, और सॉफ्ट कॉपी में मैं ये बोलती हूँ आप मुझे सॉफ्ट कॉपी देंगे और मैं इसको तुरंत उर्कुंड में डाल दूंगी और डाल करके इसका प्लेजरिज्म चेक कर लूंगी, टर्निटिन में डाल दूंगी, ग्रामरली में डाल दूंगी। सो दे आर वेल अवेयर कि ऐसी चीजें हो सकती हैं और 10% के नीचे ही मैं एक्सेप्ट करूंगी। So at this level only, when they are writing not research paper, just simple assignment, they get ideas from internet, but they write it down in their own words and express their own suggestions. This is the whole target. The final step is to develop effective academic skills. और मेरा whole target उनको ये चीज बताना इसीलिए रहता है कि मैं plagiarism test कर लूंगी, so that at this very base level उनका जो एकेडमिक स्किल्स है, उनका जो राइटिंग स्किल्स है वो इफेक्टिव बन जाए, सो दैट फ्यूचर में वो इस एक्टिविटी में कभी इंडल्ज ना हो। अभी से उनके बेस को हमें क्लियर करना है। कॉमन इश्यूज ऑन इन प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म में जो कॉमन इश्यूज हम सब फेस करते हैं, द स्टूडेंट एंड रिसर्च स्कॉलर्स मोस्टली प्लेजराइज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। एक तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज प्लेजरिज्म, जो आपकी और मेरी ड्यूटी है इस लेवल पे बच्चों को समझाना, चाहे हम अपने अंडर ग्रेजुएट बच्चों को समझाएं, अपने पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को समझाएं, या फिर अपने रिसर्च स्कॉलर्स को। अगर आप यूजी लेवल पे समझा देंगे तो पीजी लेवल पे कभी ये इशू नहीं आएगा, बच्चे कभी प्लेजराइज नहीं, उनको एथिकल रीजंस बताएं आप, ठीक है। सो स्टूडेंट प्लेजराइज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता ही नहीं होता है प्लेजरिज्म है क्या। लैक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ प्लेजरिज्म, उनको ये नहीं पता प्लेजरिज्म होता क्या, किस तरीके से करते हैं, और जो टॉपिक पे आप उनको काम करने दे रहे हैं उस टॉपिक का भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कराना आपका काम है। अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से उनको नहीं समझाया, आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा, कंप्यूटर पे जाएंगे। लेकिन अगर द कॉन्सेप्ट्स यू हैव मेड देम अंडरस्टूड इन देयर हेड, जस्ट अलाउ देम टू राइट इट यूजिंग देयर एकेडमिक स्किल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, क्यों बच्चे प्लेजराइज करते हैं, ईज एट अपॉर्चुनिटी, बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म विद अ सिंगल क्लिक ऑफ माउस। उनको लगेगा इतना एफर्ट क्यों करना है, दिमाग क्यों लगाना है, एक सिंगल क्लिक करेंगे और सब कुछ इजीली अवेलेबल है। व्हेन यू एंड आई वर किड, ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, वी वर नॉट like aware of the kind of digital system that students are friendly with. We used to go to library, we used to get a number of books issued, और उस बुक को पढ़ के फिर हम अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके we used to provide our assignments, जो आज के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इस चीज को समझाना कि प्लेजरिज्म क्यों नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट, देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन एकेडमिक ट्रेडिशन, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं एकेडमिक में, उनको लगता है हमारे कल्चर में ये चीज नहीं है, हमने इस लेवल पे ये पढ़ाई नहीं करी। तो जिस भी लेवल पे जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपको उनको ये चीज समझाना है कि प्लेजरिज्म इज अनएथिकल, इट्स एन ऑफेंस, इट्स अ क्राइम एंड इट्स अ थेफ्ट। जैसे बच्चे, जब हम बच्चे रहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें ये सिखाते हैं चोरी नहीं करना है, वैसे ही एज अ टीचर यू आर देयर पेरेंट्स, आपको समझाना है प्लेजरिज्म इज अनएथिकल एंड इट्स अ काइंड ऑफ एकेडमिक थेफ्ट, दे मस्ट नॉट इंडल्ज इन दैट। Why students plagiarize? Again, a survey has been done, और उस सर्वे में ये देखें 34% of the total students and research scholars they plagiarize because of lack of research skills. उनके पास skills ही नहीं है और उनको research paper लिखना है, तो कहाँ से लाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको पब्लिश कराएंगे। The second most prominent reason, 26% people plagiarize because they don't have time. उनके पास टाइम है व्हाट्सएप
को सर्व करने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, ट्विटर देखने के लिए, इंस्टा देखने के लिए, लेकिन ये टाइम नहीं है कि आइडियाज लेके खुद से लिखे। तो व्हाट दिस है, टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। 22% केयरलेस नोट टेकिंग। क्लास में जब आप लेक्चर्स लेते हैं, कुछ उनको हैंडआउट्स भी देते हैं, what I do in my lecture, I never make them write things. Instead, I bring things in a soft copy. वो soft copy मैं उनको बाद में देती हूँ, लेकिन क्लास में उस soft copy के थ्रू, examples के थ्रू, I make my lecture interactive and lively so that the concept goes into their head. अगर उनका पूरा टाइम सिर्फ आप जो बोल रहे हैं वो लिखने में रहेगा, तो उनका माइंड नहीं चलेगा आप क्या कह रहे हैं उसको समझ। So make this habit whenever you are taking in the mode of taking lectures. Please don't let your students indulge in only writing. जो आप कह रहे हैं उसको अगर लिखेंगे तो वो अपना ब्रेन अप्लाई करके समझ नहीं पाएंगे आपके कॉन्सेप्ट को, वो आप बाद में दे दें उनको और उसी कॉन्सेप्ट को क्लास में समझाएं। तो वो जो लिखते हैं आधा लिखते हैं, आधा लिखे बाद में जाके घर पे पढ़ा, समझ में नहीं आया तो उठाओ कॉपी पेस्ट करके मैम को दे दो, मैम को क्या पता चलने वाला है। बट वी आर ऑल्सो स्मार्ट पीपल एंड जस्ट बाय रीडिंग देयर लैंग्वेज वी मेक आउट दिस इज नॉट देयर लैंग्वेज। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, लेट अस ब्लेम आवरसेल्व्स कि हमने उनको उस लेवल पे स्किल्स नहीं दिया, उनको कोप अप नहीं किया, उनको वैसी ट्रेनिंग नहीं दी। अगर वो ट्रेनिंग आप इस लेवल पे देंगे तो कभी इसकी नौबत नहीं आएगी प्लेजरिज्म की। And 18% of students plagiarize. Research scholars plagiarize because they have a confusion on how to cite sources. उनको पता है हमने कहीं और से लिया, लेकिन साइट कैसे करें ये उनको नहीं आता। तो जब उनको ये नहीं आता तो वो साइटेशन एस्पेक्ट छोड़ देते हैं, और जैसे ही छोड़ा दैट पोर्शन बिकम्स plagiarized. So let us take all pledge today कि हम इन एस्पेक्ट के ऊपर हम एज अ टीचर एडुकेटर काम करेंगे और इस अनएथिकल प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट्स के बीच में, अपने रिसर्च स्कॉलर्स के बीच। Why it is important to know about plagiarism? Plagiarism के बारे में जानना इसीलिए जरूरी है कि अगर हम जानेंगे तो ओरिजिनल काम प्रोड्यूस करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो आइडियाज हैं वो बहुत क्लियरली हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। And third, as part of an academic community, you are expected to abide by its ethical practices. बहुत सारे rules and regulations होते हैं, laws होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो गलत है उस काम को हमें नहीं करना है, इसीलिए भी जरूरी है प्लेजरिज्म के बारे में डालना। So we must stop plagiarism. How to remove plagiarism? Plagiarism अगर आ जाए आपके रिसर्च पेपर में तो आप उसको, या फिर ना आए उसके लिए आप क्या करेंगे? Important aspects. I'll just take 10 to 15 minutes more. I'll wind up by 4. First is paraphrase. आप paraphrase, para मतलब जो पैराग्राफ है उसको आप rephrase करें। सपोज आपने कहीं से कोई 2-3 लाइन दिया और उसको as it is कॉपी कर दिया, जैसे ही आपने उसको टर्निटिव सॉफ्टवेयर में डाला पूरा पैराग्राफ प्लेजराइज्ड हो गया, रेड कलर से मार्क हो गया और हाई प्लेजरिज्म। अब आप परेशान है क्या करूं मैं इसको? ठीक है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले आपको ध्यान देना था, लेकिन अगर आपका प्लेजरिज्म आ गया, you can use paraphrase. Paraphrase is the method of reading the source and putting the idea in your own words. आपने आइडिया उनका लिया लेकिन उनके वर्ड्स तो मत उठाओ, उसको अपने लैंग्वेज में आप समझाने की कोशिश करो। You will have to use quotation mark if you do use or copy two words together. अगर आपने उनके वर्ड टू वर्ड चीजें उठाई हैं तो आपको कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, ये कहते हुए कि ये आपका आइडिया नहीं है, किसी और का काम है। लेकिन पैराफ्रेज में आप उनके आइडियाज को अगर ले रहे हैं, कोशिश करिए 10% 15% तक ही उनके आइडियाज को उठाएं और अपने वर्ड में उसको पैराफ्रेज करें, दैट मींस उस पैराग्राफ को रीफ्रेज करें। ओके, पहला चीज आपको ध्यान में रखना है। पैराफ्रेज को थोड़ा और डिटेल में हम आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। दूसरा है साइटेशन। अगर किसी के काम को आपने लिया है तो उसको प्रॉपरली आप साइट करना ना भूलें। साइटेशन आपका एमएलए और एपीए स्टाइल में रहता है, शिकागो स्टाइल भी बहुत सारे जर्नल्स डिमांड करते हैं, और जब आप साइट करेंगे तो आपका प्लेजरिज्म लेवल ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। द थर्ड इज कोटेशन। यूज द कोट इन द टेक्स्ट एग्जैक्ट वे इट अपीयर्स एंड डू नॉट चेंज एनी वर्ड इनसाइड इट। अगर आप किसी के कोट को उठा रहे हैं तो उस कोट में जो जो वर्ड जैसे जैसे जिस जिस सीक्वेंस में है उसको सेम आप उठा के अपने रिसर्च पेपर में लिखेंगे, अगर आप कोटेशन यूज कर रहे हैं, बाय गिविंग प्रॉपर साइटेशन टू दैट पर्सन। अवॉइड प्लेजरिज्म बाय कोटिंग प्रॉपरली। लेकिन अगर आपने वर्ड टू वर्ड उठाया उस केस में आपका 100% प्लेजरिज्म आ जाएगा, क्योंकि आपके आइडिया ये है। अगर आपको उन कोट का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो उसको रिफ्रेम कर लो, पैराफ्रेज कर लो और अपने रिसर्च के कंटेक्स्ट में उसको रिफाइन कर लो। एंड द फोर्थ इज रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिसर्च।
allot a page or two for listing the work cited in your research to avoid plagiarism. हम सब ये काम करते हैं. After we have done conclusion, हम एक reference section रखते हैं और जिसमें हमने जिनके जिनके वर्क के काम को लिया उन सबको रेफर करते हैं इन द रेफरेंस सेक्शन में करते हैं, और टेक्स्ट पे जहां पे हमने जो चीज आइडियाज लिया है इन टेक्स्ट साइटेशन में करते हैं. अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपका प्लेजरिज्म लेवल जो सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट होगा वो कम आएगा. तो आप पहले ये काम कर ले. सो दिस विल एनहांस योर वे ऑफ एकेडमिक राइटिंग. पैराफ्रेज क्या होता है? अ पैराफ्रेज व्हिच इज प्रोनाउंस्ड पर यू फ्रेज इज अ रीस्टेटमेंट और रीवर्डिंग ऑफ अ पैराग्राफ. मतलब उस पैराग्राफ के मीनिंग को इंटैक्ट रखना है, सिर्फ वर्डिंग्स को चेंज कर देना है. और टेक्स्ट in order to borrow, clarify और expand on information without plagiarizing. Plagiarizing मतलब आप उसका word to word नहीं ले रहे. और जैसे ही आप पैराफ्रेज करते हैं, you have an added advantage कि उनके आइडियाज के साथ आप अपने आइडियाज को भी इंक्लूड कर दे ताकि वो कुछ नया शेप ले. तो प्लेजरिज्म का चांस नहीं रहता है. In simple terms, paraphrasing is altering the wording used by someone else's in your own word plus using your own imagination and ideas. It involves rewriting the text with completely different words and phrases, keeping the original essence intact. Original ideas को आप same रखें, उसमें changes मत लाएं और उसमें new addition you are always allowed to do. Also, the key points are still to be acknowledged. लेकिन जो भी important ideas आपने उनका borrow किया है, उस ideas को आप जरूर से acknowledgement देंगे कि due acknowledgement goes to this person from where this idea has been carved out, has been taken care. Paraphrasing is an important tool to use when writing research papers, essays, and important pieces of journalism. हम usually इसको refer करते हैं. There is a very fine line between plagiarism and paraphrasing. ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा thin hairline difference होता है दोनों के बीच में. If the wording of the paraphrase is too close to the wording of the original content, it is plagiarized. आपने paraphrase कर लिया और क्या किया? सिर्फ word को उठा के इधर से इधर और इधर से इधर कर दिया. This is not paraphrasing. Paraphrasing is rewording. आप नए words use करें, ideas को intact. The main idea needs to come through, but in your own words. ये आपको ध्यान में रखना है. To use another person's writing in your own can be accomplished with quotes and citation. Quotes और citations देंगे तो उनके ideas को आप ले सकते हैं. Plagiarism remove हो जाएगा. A quote will need to be exact wording and the author and source needs to be identified. अगर मैंने कुछ बोला और आपने अपने research paper में मेरे wordings को लिया तो word to word लेना पड़ेगा आपको और मेरा नाम आपको देना पड़ेगा because this is my saying, this is my word. Paraphrasing usually makes the passage shorter than the original. ध्यान रखिएगा, जब भी आपने एक paragraph किसी का लिया और idea समझ गए और उसको अपने words में लिखा, आप उतने words की जगह छोटे words में कम paragraph में उस idea को express कर सकते हैं. So this is one of the advantage जिससे आपका जो word limit होता है research paper का वो automatically is being taken care of. लोग क्यों paraphrase करते हैं? लोग paraphrase बहुत सारे reasons के कारण करते हैं. It depicts and reflects the author has a very clear understanding of the original extent. मैं paraphrase तभी कर पाऊंगी जब मैं original work को अच्छे से समझ जाऊंगी and when I have a clear understanding of the original text. इतने अच्छे से मैं समझ जाऊंगी कि उसको मैं अपने language में अपने तरीके से लिख सकूं. This is the importance. This is why people paraphrase. Paraphrasing gives one the chance to expand their own knowledge by explaining something in your own words. क्योंकि आपको मैंने बोला आप अपने points को भी इसमें explain कर सकते हैं. तो एक chance मिलता है अपने horizon को broad करने. Oftentimes we learn better when we are absorbing information and paraphrasing in it is an excellent chance to do so. How to paraphrase? Paraphrase कैसे करें हम? Read and make sure you understand the original piece of writing. पहला step. दूसरा, make a note of the key ideas. जो भी key ideas original text में उनको कहीं पे लिख लीजिए, बंद कीजिए और अपने दिमाग से सोचिए कैसे इसको अपने original text में लिखा जाए. Write a version of the text in your own word without referring to the original. दोबारा original को नहीं देखना है, आपने सिर्फ key points note down करें. Compare the two with one another, making any amendments to the new version. अब आपने लिख लिया, अब उसको पढ़ें और ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें और देखें क्या आइडिया सेम है. अगर आइडिया सेम है, forget about that, use this and reference the source. ये बहुत जरूरी है. So some suggestible tips for researchers, जो researchers इस फील्ड में हैं और जो paraphrase करते हैं. Begin your new version of text at a different point than where the original text begins. ओरिजिनल टेक्स्ट में जहां पे जिस पॉइंट में है, आप उस पॉइंट में अपने पैराफ्रेज वाले मीनिंग वाले पैराग्राफ को न डालें, नए तरीके से उसको शुरू करें. मेक गुड यूज ऑफ सिनोनिम. आप बहुत सारे उसमें जो वर्ड्स हैं उसका सिनोनिम यूज करें और थोड़ा
advanced level of synonym use करें. Consider changing the sentence structure such as changing from a passive voice to an active voice. अगर उसमें कुछ passive है तो आप active use कर लें, उसमें active है तो आप passive use कर लें. It's just the mode of voice change, but the essence of the meaning of the paragraph remains the same. Examples of paraphrase, मैं एक ही example लूंगी, यहाँ पे आपको बताऊंगी. 3 लिखा है, जैसे giraffe likes acacia leaves and hay and they can consume 75 pounds of food a day. अगर इस लाइन को मुझे paraphrase करना है, मैं कैसे करूंगी? A giraffe can eat up to 75 pounds of acacia leaves and hay every day. इससे छोटा हो गया, मीनिंग सेम आ गया, लैंग्वेज चेंज कर दिया मैंने. दिस इज हाउ अ पैराफ्रेजिंग इज डन. सो पहला प्लेजरिज्म रिमूव करने का जो टेक्निक था वो था पैराफ्रेज. सेकंड इज समराइज. सारी चीजों को हम समराइज करके अपने लैंग्वेज में लिखें. समराइजिंग इज एक्सट्रैक्टिंग द की आइडियाज एंड मेन पॉइंट्स फ्रॉम एन ओरिजिनल सोर्स. ओरिजिनल सोर्स को रेफरेंस करना है, ये आप नहीं भूलेंगे. एंड द समरी शुड बी आइडियली शॉर्टर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट. इसमें आप अपने लैंग्वेज लिखेंगे, अपने वर्ड्स यूज करेंगे एज फार एज इट इज पॉसिबल. 2 पॉइंट्स, 2 चीजें जो आपको ध्यान रखना है समराइज में. राइट द समरी एंटायरली इन योर ओन वर्ड्स बाय पैराफ्रेजिंग द ऑथर्स आइडियाज. पैराफ्रेज तो करना ही है और पूरे आइडियाज को आपको समरी देना है एक पैराग्राफ में. साइट द सोर्स विथ एन इन टेक्स्ट साइटेशन. इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट में जहां आप दूसरे के आइडिया को पैराफ्रेज करके लिख रहे हैं, वहां पे आपको in text, उस टेक्स्ट के अंदर citation देना जरूरी है. Suppose if you are taking my article and if my name is Shweta Rani and I have written an article in 2023, so you will write Rani, comma 2023 within bracket after you have written my idea in a paraphrased form. This is cite or citation. एक इंसान है, उसका कोई काम है, उसको 3 जन यूज कर रहे हैं. Proper citation is must. So citations are the way in which you give credit to others for their work and avoid committing प्लेजरिज्म. आप 2 काम करते हैं, जिसने जो काम किया उसको ड्यू क्रेडिट भी मिल गया और आपने अगर उसको पैराफ्रेज करके अपने वर्क में अपने तरीके से यूज किया तो प्लेजरिज्म भी नहीं आ रहा. They are also the way in which you join the professional or scholarly conversation on a given topic. बहुत सारे लोग scholarly converse करते हैं आपस में, उस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं by giving citations. और जितना ज्यादा citations आपके होंगे उतना आपका H index, I10 index बढ़ता है, which is a way of assessing one's research progress. Okay, there are 2 basically styles, American Psychological Association APA और एक होता है Modern Language Association. हम research paper के need के according we use either of them. The third is also the Chicago. एक होता है in text जो मैंने आपको बताया, जैसे in text citations are used within the text of your paper and indicate to your readers from which source listed in your work cited or bibliography you are expecting information or quotation. जैसे मेरे किसी आइडिया को आपने लिया तो आपने इन टेक्स्ट दिया रानी, 2023, लेकिन जो डिटेल है वो रेफरेंस सेक्शन में जाएगा. तो इन टेक्स्ट में आपने मुझे ड्यू क्रेडिट दिया और मेरा डिटेल्ड पब्लिकेशन कहां से आपने ये आइडिया उठाया वो रेफरेंस सेक्शन में जाता है. जैसे एक ऑथर है ली सिमोन ए, उनके आर्टिकल का ये नाम है, उनका सोर्स टाइटल कॉलेज स्टूडेंट जर्नल. तो आप किस तरीके से लिखेंगे? वॉल्यूम एंड इशू आ गया, पब्लिकेशन डेट आ गया, पेज नंबर. यू विल राइट फर्स्ट द सरनेम, देन द 2 initials of the name, 2015 dot, variation in study pattern among college student, a review of literature. This is the name of the article. College student journal, this should be in italics. This is the volume, this is the issue and this is the page number. APA style में इस तरीके से reference करते हैं, MLA style में it goes like this. So important reminders before we wind up. Always double check all your citations for accuracy. सब आपने पेपर को सबमिट करने के पहले एकेडमिक राइटिंग को एक लेवल पे लाने के लिए मेक श्योर कि आपने सारे साइटेशंस प्रॉपर जगह पे दिए हैं. मेक श्योर ऑल योर इंटेक्स साइटेशंस मैच द सोर्सेज लिस्टेड इन द वर्क साइटेड. जो आपने इंटेक्स साइटेशन किया उसका रेफरेंस एंड में अवेलेबल है. Anyone reading your work should be able to easily locate the original source of any material you use in your own work. आपने सिर्फ रानी 2023 दिया, somebody else is reading और उनको इंटरेस्ट है मेरे काम में, तो रेफरेंस सेक्शन में आप पूरा डिटेल रेफरेंसिंग देंगे so that if they want to access to my article they can directly go there. कोट्स एंड कोटेशंस, वैसे आई प्रेफर कि अपने रिसर्च पेपर में आप किसी के भी कोट या कोटेशंस को यूज करना अवॉइड करें क्योंकि उससे 100% प्लेजरिज्म आता है. आप ये कोशिश कर सकते हैं पैराफ्रेज करके आइडियाज ले और शॉर्ट कर ले उसको. सो देन इट विल हेल्प विद प्रॉपर ड्यू in-text citation and referencing style. Before we wind up, I want you all of you to know कि जहां से भी हम किसी भी चीज का सोर्स लेते हैं, कहां से हम वो उठाएं,
which is the example of good sources and what are the examples of bad sources. जैसे यूनिवर्सिटी प्रेस से अगर आप कोई आर्टिकल, कोई डेटा, कोई मैप्स उठाते हैं, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, it is a good source of citation. Major publishing houses like Penguin, Random House, well-known organizations like United Nations से कोई डेटा ले रहे हैं, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट से ले रहे हैं, these are authentic. आप ऐसे ही रैंडम गूगल पे जाके गूगल करके और कहीं से भी नहीं उठा सकते. These are not good sources. Well-known newspapers like New York Times, well-known media sources का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, BBC, CNN, अच्छे magazines, online journals like JSTOR, वहां पे जो ऑनलाइन journals available हैं, that you can use as a good source. Now, non-reliable sources, Wikipedia. Wikipedia का data is not at all reliable. Please don't use that. Personal blogs. किसी ने किसी भी चीज के बारे में personal अपना blog डाला, that is not a good source. You cannot use it. Non-credible newspapers, magazines, editorials, and think about bias. किसी के भी ideas को लेंगे, हो सकता है वो किसी aspect को लेके bias रहे. So उसके basis पे आप अपने research का base नहीं बना सकते. Okay. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. जब हम प्लेजरिज्म की बात करते हैं, ये ऐसे 5 renowned, let me not say scholar, these are also the politicians जिनको क्रिप किया गया है वर्ल्ड में. These are some of the biggest plagiarized cases in the world. Martin Luther King Jr., जिन्होंने he is accused of plagiarizing dissertation. I have a dream speech scandal हुआ था जिसको उन्होंने 100% plagiarize कर लिया था in 1955. Saddam Hussein, we all know, the assassinator in Iraq. He is also accused by Condoleezza Rice, the foreign ministry in United States, and he plagiarized 12,200 page declaration of United Nations के पेज को इन्होंने पूरा plagiarize कर लिया. Richard Owen, इन्होंने डार्विन का ग्रेटेस्ट एनिमी था और डार्विन की थ्योरी को ही इन्होंने प्लेजराइज कर लिया. टोनी ब्लेयर, डॉजी डॉजियर डॉक्यूमेंट था, उसको उन्होंने मोस्टली कॉपी किया और इंक्लूडेड इवन टाइपोस, उसके टाइपोस को भी कॉपी कर दिया. सो ये सब कुछ ऐसे रिनाउंड प्लेजराइज्ड केसेस है वर्ल्ड हिस्ट्री में. एंड द लास्ट टी.एस. इलियट, ही प्लेजराइज्ड द वेस्टलैंड, और इन्होंने इतना ज्यादा प्लेजरिज्म किया कि ही इज क्लेम्ड एज मैच्योर पोएट्स स्टील. तो जस्ट फॉर योर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए. So we must aim at creativity far above plagiarism. Plagiarism के ऊपर there is a world of creativity. Get the ideas to form your own research, but do not plagiarize. Believe in your own creative mind. So in concluding remarks, it is essential to take academic writing seriously. हम सबको अपने academic writing को seriously लेना चाहिए because all of us are unique and we have a different style of academic writing. The only point is that we need to explore. सोचिए, हम सब अलग हैं, हम सब के पास कुछ यूनिक फीचर है, क्यों हम दूसरे का काम ले, क्यों उसको हम काम लेके अपना नाम देके उसको पब्लिश करें. आप आइडियाज थोड़े बहुत ले सकते हैं लेकिन अपना ओन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे. And we should not underestimate the importance of academic writing that all of us possess. It can help you learn new topics, sharpen critical thinking, your abilities can be enhanced, it can push up your intellect to grow. आप एक बार सोच के देखिए, नए तरीके से एक अच्छा piece of writing लिखिए, it will give you a kind of motivation कि मैं और research करूं, और सोचूं और लिखूं. So it build time management abilities and equip you for more difficult challenges. एक research writing है, academic writing है, जो आपको हर तरीके के challenges के लिए life में face करता है. It will help you to develop your writing ability and to write academic papers clearly and succinctly. आप एक बार लिख के तो देखिए और journals में भेजिए, देखिए वो कैसे नहीं accept होता है. To be successful, you must put effort into your written work. मेहनत करना है आपको अपने written work में. And do your best when writing papers without duplication of others. अपने नए ideas को carve out करिए, कुछ innovative चीज सोचिए. It is important to properly conceive to the contributions and information made by other people. दूसरे के contributions से you can identify the major contributions and cite them. इससे क्या होता है? It shows respect for their work. आप उनके काम को due credibility दे रहे हैं, respect दे रहे हैं. And most importantly, you are giving credit when credit is due. And we must acknowledge them, we must cite them, we must source them, we must credit them, and above all, we must respect them. So a perfect amalgamated piece of academic writing will have less chances of editing, less of plagiarism, and more inclination towards a reputed publication, having a wider reach and having a wider, I can say, H index and ITIN index. So with this detailed discussion, today's detailed discussion on academic writing, editing, publishing, and avoiding
plagiarism. I wish all of you a very bright future to have, you can say, to make yourself indulge in some good piece of academic writing, in some scientific academic writing, in some priority-based academic writing, and in some meaningful academic writings ahead. So with this, wish you all a very bright future ahead. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. इतना लंबा चौड़ा हमारा थीम, जिसमें एकेडमिक राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग एंड अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, और मैम ने बिल्कुल राइट टाइम इसको पूरा करके एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया मैम। थैंक यू वेरी मच, रियली। आपने जो अपनी स्पीड रखी, और वो स्पीड इतनी जरूरी थी, तब ही ये पूरा हो सकता था। इतना लंबा, इतना बड़ा, इतने 3-4 टॉपिक जो साथ में, एक साथ में इसी सेशन में पूरे करने थे, मैम आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much, sir. वैसे तो मैम ने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं जिसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड द टॉपिक, यू कैन आस्क। मुझे लगता है कि चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने अपना शुरू से लेकर लास्ट तक 2-4 क्वेश्चन मैंने भी देखे थे, लेकिन उनके जवाब मैम के द्वारा दिए जा चुके हैं। फिर भी मैम अगर चाहें तो एक बार चैट बॉक्स देख लें, और अगर संभव हो तो उनका कुछ रिप्लाई दे दें। Ji, sir, let me just research it. How to describe Howard in research paper? This is the first question from Dr. Anup Kumar Mishra. I would request Dr. Anup Kumar kindly unmute yourself और आप खुद से क्वेश्चन पूछें अपने। मैं कह रहा हूँ कि हार्डवर्ड को पेपर में डिस्क्राइब कहाँ पर करें? फिर से पूछें आप डॉक्टर अनूप, आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। अच्छा, किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी पेपर में हार्डवर्ड डिस्क्राइब कहाँ पर करे जाएंगे? आप हार्वर्ड पूछ रहे हैं या हार्डवर्ड? हार्डवर्ड। अच्छा, हार्ड वर्ड आर बेसिकली दोज वर्ड्स जिससे आपके जो मीनिंग्स होते हैं ना, वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं और थोड़े से ना डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, आप जब भी रिसर्च पेपर लिखें, हमारे रिसर्च पेपर का टारगेट होता है कि वाइडर ऑडियंस को समझ में आए और सबके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को वो मीट करे। तो आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो सिंपल, ल्यूसिड, टेम जैसे कहते हैं ना, पालतू, कि सबको वो समझ में आए। तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग, लेकिन उसके साथ लेवल हाई होना चाहिए। वर्ड्स आपके टेम, सिंपल, ल्यूसिड होने चाहिए, लेकिन आपका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, आपके आइडियाज हाई लेवल के, उनको आप सिंपल लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करें। तो हार्ड वर्ड कभी ना यूज करें अपने रिसर्च पेपर में। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक वीटी जेम्स ने पूछा है, मैम व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑथर इज required to be obtained and mentioned so in the paper while citing? ये डिस्कशन में भी मैंने क्लियर किया था। सपोज मैंने अगर कोई डायग्राम बनाया अपने रिसर्च पेपर में और आप मेरे उस डायग्राम को एज इट इज उठा के अपने रिसर्च पेपर में डाल रहे हैं, तो रिप्रोड्यूस आप कर रहे हैं, सेम चीज को आप अपने लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको रिटन कंसेंट मुझसे लेना जरूरी है कि आप मेरे डायग्राम को यूज कर रहे हैं। अगर मेरे आइडियाज को ले रहे हैं तो अपने रिसर्च पेपर में आप मुझे ड्यू क्रेडिट देंगे, इन टेक्स्ट भी देंगे, इन टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंस में भी देंगे। आप बहुत बार ऐसा होता है, अगर हमने कहीं रिसर्च पेपर भेजा पब्लिकेशन के लिए, तो उनका जो एथिक्स और गाइडलाइंस होता है उसमें ये मेंशन्ड होता है कि इफ यू आर कॉपिंग समबडी एल्सेस टेबल और फिगर्स, ड्यू परमिशन यू मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिशर। तो ये काम आपको करना है। अगर आप उसको, उस आइडिया को लेके खुद से तैयार कर सकते हैं देन इट इज ओके, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट टेबल उठा लिया या फिर एग्जैक्ट आपने फिगर उठा लिया तो आपको उनसे परमिशन चाहिए ही चाहिए।
Again, our question is from VT James. What are the हाँ ठीक है ये तो हमने कर लिया. Original author is required to be obtained. That is all, sir. The question थे. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि अब तो लगभग सभी के क्वेश्चंस पूरे हो गए होंगे और मैम ने इतना डीपली, इतना विस्तार से हर पॉइंट को समझाया है कि कहीं पर अब चांस बचा नहीं है कि कुछ और समझाया जा सके। और मैं मैम को अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इतने कम समय में इतने बड़े टॉपिक्स को इतने अच्छी तरीके से एलेबोरेट किया। तो मैम थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से ही सीखा हुआ कि आपको एक छोटा सा एप्रिसिएशन लेटर में आपको इसी प्लेटफॉर्म पर भेंट कर रहा हूँ। मैम प्लीज इसको स्वीकार कीजिए। Thank you so much, sir. Thank you so much. और जो भी मैंने लिखा है मैम आपने 100% उसको पूरा किया है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं की। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. पार्टिसिपेंट्स के साथ सर आपने जो फीडबैक लिंक शेयर किया उसमें पार्टिसिपेंट्स का क्या फीडबैक आता है जरूर आप मेरे से शेयर करिएगा। श्योर, इससे ना 100%। वी गेट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन की कहाँ पे क्या कमी रह गई वो नेक्स्ट टाइम ना रहे, क्योंकि अपने तरफ से तो हम ये कोशिश करते हैं कि इस 1.5 घंटे के सेशन में जस्टिफिकेशन हो जाए टाइम को रखते हुए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रियंका सिरोही मैम, आर यू देयर? Yes, sir. Please ma'am, this is your turn. Okay, thank you, sir. Thanks a lot. Very good evening to all of gather here. I am Priyanka Shrohi, Assistant Registrar in Research Department of Mahavir University. On this wonderful evening, I am on the behalf of my whole team members and all the authorities and organizers pass my warm thanks to all the participants for their significant presence in this conference. I especially want to thank our resource person, Dr. Shweta Rani, Program Director, Research, CTPD, India, Assistant Professor, Department of Geography from Dayal Singh College, University of Delhi, for her vital appearance. And you are motivated to us for giving more and more knowledge about your academic writing, editing, publishing, and how to avoiding plagiarism. It was really informative conference in true sense. I am pretty sure the precious knowledge you gave us will definitely help us in our studies and future learning also. Your words really means a lot to us and have encouraged us to respect all the participants. I extend my gratitude to Dr. Shivpal Sir, Dean Education, Department of Mahavir University, Meerut, arranging this seminar. And finally, I did like to convey my gratitude to everyone here for taking the time to us today and assisting us in making this conference session a huge success. Thank you, everyone. Thanks a lot. Hand over to sir. Thank you ma'am, thank you very much. And I think this is time for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you very much. Thank you very much.
डॉक्टर श्वेता रानी मैम, जी मैं सर। रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सीटीपीडी के बारे में थोड़ा सा बचे हुए जो भी ऑडियंस हैं 71 अभी हैं इनको बताएं, और उससे जुड़ने के लिए क्या तरीका है, कैसे हम आपसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ नेशनल लेवल पर इससे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो क्यों ना अच्छे लोगों को और जोड़ा जाए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सीटीपीडी स्टैंड्स फॉर काउंसिल फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसको हम एब्रिविएट करते हैं सीटीपीडी करके। एंड दिस इज, हम नेशनल ही नहीं कहेंगे, इंटरनेशनल लेवल कहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रजिस्टर्ड एनजीओ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आर मेन टारगेट इज टू एम्पावर द टीचर्स एंड द टीचिंग कम्युनिटी। टीचिंग कम्युनिटी को एम्पावर करना हमारा मेन टारगेट है। हमारा जो एफर्ट होता है वो सेल्फलेस होता है, इसमें कहीं पे भी वो मनी फैक्टर नहीं आता है। जैसे जितने भी प्रोग्राम्स हम सीटीपीडी में करवाते हैं उसमें बाहर से रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं, और हम खुद भी एज अ रिसोर्स पर्सन वहाँ काम करते हैं। हम उस जो मनी एस्पेक्ट है उससे काफी दूर हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही वेलफेयर है। हम जो बहुत सारे एफडीपीज हमने करवाए हैं, हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, बहुत सारे सर्कल सीटीपीडी के अंदर है, जैसे क्वालिटी सर्कल है, रिसर्च सर्कल है, चेतना सर्कल है, आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम सर्कल है, शिक्षा समावेश सर्कल है। तो अलग अलग विंग के ऊपर अलग अलग एस्पेक्ट को लेके हमने अलग अलग सर्कल्स बनाए हैं, जिनका टारगेट या जिनका थीम अलग होता है। जैसे रिसर्च सर्कल में हम बेसिकली रिसर्च एस्पेक्ट से रिलेटेड जितने भी एफडीपीज होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम कंडक्ट करते हैं रेगुलर इंटरवल पे, और सारे रिसर्च के नुआंसेस को एक्सप्लेन करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को। जो भी पार्टिसिपेंट्स इनसे जुड़ते हैं उनके लिए कोई पार्टिसिपेशन फीस नहीं होता है। हमारा टारगेट है वो सिर्फ जुड़े और हमसे सीखें, और अपने टीचिंग कम्युनिटी को वो भी एम्पावर करें, क्योंकि नॉलेज किसी एक जगह से आता है तो वो रेडिएट होना चाहिए सारे डायरेक्शन। इट शुड नॉट बी बाउंडेड बाय अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें हमारा बेसिक टारगेट है इंडिया हैज अ वेरी रिच कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज। तो इसके बारे में लोग जाने, मेडिसिन में कैसे हेल्प करता है, एस्ट्रोनॉमी में कैसे हेल्प करता है, और जो हमारे सारे वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जितने सारे भी लाइक एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड लोग कैसे नॉलेज एनहांस कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कैसे हेल्प करता है। तो एंशियंट और मॉडर्न का अमालगमेशन आ जाता है इंडियन नॉलेज सिस्टम। क्वालिटी सर्कल में कैसे हम क्वालिटी रिसर्च में जाते हैं, एक्रेडिटेशन कैसे होता है नैक का, इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का एकेडमिक ग्रोथ हम कैसे करें, नैक पीयर टीम आती है उसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें, एकेडमिक ऑडिट क्या होता है, ये सब हम क्वालिटी सर्कल में सीखते हैं। वैसे और भी 5-6 सर्कल्स है जो हमने रन किया है, और हर सर्कल के अंदर वी हैव अ प्रोग्राम डायरेक्टर, we have 2 associate program directors, उनके नीचे भी have the program coordinators, और फिर हम moderators। तो इस विंग में हम काम करते हैं और हमेशा एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में रहते हैं। तो हमारे लिए टाइम फैक्टर मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है अच्छा नेक्स्ट एफडीपी कौन सा आने वाला, और हम सब मिलके कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करें। सो ऑल ऑफ अस आर रेडी एंड ईगर टू लर्न एंड टू डिसेमिनेट नॉलेज टू आवर टीचिंग फ्रेटर्निटी। इसका एक प्रॉपर वेबसाइट है www.ctpd.in, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ इसको। और इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे ज्वाइन करने के लिए वी हैव अ लाइफ मेंबरशिप, आप इसके लाइफ मेंबर भी बन सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप के लिए वी हैव केप्ट, उसके लिए एक नॉमिनल अमाउंट हमने रखा है 1100, जिससे एक बार आप जुड़ जाएंगे उसके बाद बहुत सारी लाइक सेमिनार्स एक्टिविटीज होते हैं जिससे आप खुद को एम्पावर फील करेंगे, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और सारे जितने भी हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं सब अलग अलग फील्ड से हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, बहुत सारे लोग इसमें देहरादून से हैं, गुरुग्राम हरियाणा से हैं, यूपी से काफी सारे लोग हैं, साउथ इंडिया से हैं, आउटसाइड इंडिया भी है। तो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सब डिस्टेंट प्लेसेस से ना जुड़े हुए हैं। सो ज्योग्राफी डज नॉट मैटर, ऑल दैट मैटर्स दैट वी हैव अ कॉमन इंटरेस्ट कि हमें टीचर को वेलफेयर करना और एम्पावर करना है। तो बड़े सारे एक्टिविटीज इसके हैं, मैं चाहूंगी आप वेबसाइट पे जाएं, डिटेल देके
वहाँ पे लाइफ मेंबरशिप का भी एक ऑप्शन है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज जुड़े और जुड़ के खुद को बेनिफिट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रियली मैं तो उससे जुड़ चुका हूँ और आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ हर चीज में, हर इवेंट पर। और एक चीज जो मैंने भी आप लोगों से सीखा है कि मनी मैटर नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं, ये हमारा 10 डेज कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इससे पहले 10 डेज हम सेमिनार कर चुके हैं, उससे पहले भी काफी मैंने प्रोग्राम करवाए हैं। तो उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बेनिफिट दिया जाए। मनी मैटर कुछ भी नहीं। तो मैंने मैम आप लोगों से ये सीखा है कि ज्ञान को बांटो, उसके कुछ कमाने की मत सोचो। सर बहुत ज्ञान जितना बांटेंगे उतना 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 बढ़ेगा, उतना उतना बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा ज्ञान। बिल्कुल नमस्ते मैम, हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर मंजुला गुजरात से बोल रही हूँ। जी मैम। आपका कार्य हमने देख लिया, बहुत ही अच्छा है। हमने फीस भी सेंड की है, तो आप जब बोल रही थी तब हमने मेंबरशिप में ज्वाइन कर लिया है। अरे अरे वाह मैम, थैंक यू। जरूर Thank you, जुड़ेंगे। और इससे आप पहले जुगनू मैम भी आ चुकी हैं, उन्होंने भी थोड़ा बताया था इसके बारे में। जी मैडम तो ने हमारे भी participants इसके देख बारे पा में रहे हैं। बताया था। बहुत अच्छा रहा आज का आपका लेक्चर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही सटीक रूप से आपने बहुत टूके आंसर देते हुए बहुत ही अच्छी रूप से आपने प्रेजेंट किया। एक भी कोना छूट न पाए इस रूप से आपने पॉइंट टू पॉइंट और बहुत टूक में पर विस्तार से आपने बता दिया। तो लॉट ऑफ थैंक्स मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। जी सुषमा कुमारी जी सर, नमस्कार जी सर। जी, बताइए मैम। मैम आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं डालती हूँ चैट बॉक्स में। सर इसमें एवरीवन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ। नहीं होगा। मैम हमें ना वो वेबसाइट जो आपने बताई वो भी शो नहीं हो रही। अच्छा मैं बता देती हूँ, www.ctpd.in। मैम मैं लिख लूं? इनबॉक्स में है मैम, वो वेबसाइट शो कर रही है अभी, आपका मैसेज शो कर रहा है। मैंने फिर से डाला, ये शिवपाल सर को डाल दिया है, वो एक बार ठीक है सारे मैम, पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर देंगे। श्योर। मैम हेलो मैम, जी यूजीसी बताएं या मंजुला केयर मैम। लिस्ट, हेलो मैम, यूजीसी या केयर लिस्ट जर्नल का कोई लिस्ट आप पूछ सकते हैं क्या? मैम ये ना इंडिविजुअली ही आपको सर्च करना पड़ेगा। आप सावित्री भाई फुले फुले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां हाँ पे यूजीसी केयर लिस्ट का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और जैसे आप क्रिएट करेंगे तो यूजीसी केयर लिस्ट 1 और केयर लिस्ट 2 जर्नल्स जितने भी हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपको। तो ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, इंडिविजुअल लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू ही एक्सेस होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। प्रणाम मुझे का नहीं लगता कि अब कोई भी एक क्वेश्चन बचा है। मैम कुछ पूछना चाहेंगे आप? मैम आपने कॉन्टेक्ट नंबर नहीं सेंड किया चैट में। मैं सर को भेज दे रही हूँ क्योंकि मुझे ना शेयर टू एवरीवन दिख नहीं रहा है। ठीक है मैम। अब दिख रहा है मैम सबको? इसके बाद भी अगर किसी को नहीं मिलेगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँ। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आज बहुत मजा आ गया है और आप में जो स्किल्स हैं वो
सबको बहुत ही प्रभावित कर चुके हैं मैम। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नाउ आप बहुत ही अच्छे रिसोर्स पर्सन हमारे साथ रखते हैं, तो हमें बहुत आनंद होता है और बहुत नया नया जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। थैंक यू सर।